Good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on statutory bank branch audit. On this subject, our very own respectable and very experienced CA Khanna ji and CA Sanjay Vasudeva ji is with us. Both are our former Senator Council member. I welcome you, sir. I welcome Ashwini Jindal ji from Jalandhar, Gaurav Gupta ji, Rajesh Jain ji, Sunil Dhamija ji, and all the attendee on behalf of Pusa Road CP Study Circle. This is our fortune, sir. I once again welcome and request Ashwini Jindal ji kindly introduce our today's speaker. Thank you very much राजेश भाई कि it is my privilege कि आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इतनी बड़ी फैकल्टीज को, चाहे वो वासुदेवा जी हैं, चाहे वो खन्ना जी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये राजेश भाई जी का पूसा स्टडी सर्कल का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ये हम मेरे ख्याल में चौथा प्रोग्राम करवा रहे हैं। हालांकि बैंक ऑडिट कम हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कम हुए हैं उसका कारण भी यही है कि हमारे मेंबर जो डिलीवर करना चाहते हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। राजेश जी उसमें पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि इस बार जितना भी ऑडिट बचा है हम इस हिसाब से करें, ताकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को परसेंटेज बढ़ानी पड़े, 80% से 100 पे जाना पड़े, ना कि उनको वापस 70 या 60 के लिए सोचना पड़े। तो उसके पूरे प्रयास राजेश जी करने जा रहे हैं और कर भी चुके हैं। 3-4 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4th या 5th प्रोग्राम है बैंक ऑडिट के ऊपर, एंड वी विल अगेन ट्राई कि एक आधा प्रोग्राम और करें बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, ताकि हमारे मेंबर पूरी अच्छी ढंग से बिल्कुल जो एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से ऑडिट कर सके। मैं हालांकि मैं इंट्रोड्यूस तो कर रहा हूं वासुदेवा जी को, संजय जी को, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं खन्ना जी का। इस जो यज्ञ है ना उसमें आहुति डालने के लिए स्पेशल यूएसए से आए हैं ताकि मेंबरों को गाइड कर सकें इन फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल मोड। वर्चुअल में तो ये यूएसए से भी कर सकते थे, लेकिन फिजिकल में भी काफी जगह पे, जैसे अभी जलंधर भी आ रहे हैं जे मंगलवार को फिजिकल प्रोग्राम पे। तो इनका पर्पस भी यही है कि मेंबर्स को इतना गाइड कर सके ताकि हम बैंक ऑडिट को कैसे बचाना है, तो उसके ऊपर पूरा इनका भी इनिशिएटिव है। वेलकम यू सर आल्सो, राजेश जैन जी एंड गौरव जी जो हमारे साथ को पैनलिस्ट हैं, और सारे मेंबर्स जितने भी हमारे पास जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि संजय वासुदेवा जी बहुत हमारी एक रिप्यूटेड फर्म है। जब भी मैं तो यहां से ही कह सकता हूं कि जब भी हम देखते हैं कि जी हमें अच्छी फर्म, जब भी कोई अच्छा ऑडिटर कंपनी सोचती है ना कि मेरे को अच्छा ऑडिटर चाहिए, तो उसके जहन में यही नाम होता है कि हमें टॉप 20 या टॉप 10 फर्मों में से चाहिए। तो संजय जी की फर्म भी टॉप 10 टॉप 20 इंडिया की फर्म्स में आती है। एससीवी एससी वासुदेवा एंड कंपनी, प्रीवियसली नोन एज एससी वासुदेवा एंड कंपनी, नाउ एससीवी एंड कंपनी LLP, एंड ही हैज आल्सो बीन the Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India from 2016 to 2019। और अगर आप देखो तो हर फील्ड में संजय जी की महारत है, स्पेसिफिकली इन द ऑडिट्स, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बैंक्स हों, चाहे वो इंटरनल ऑडिट्स हों, जहां स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ऑफ कंपनीज हों, इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके ऊपर इनकी एक्सपर्टाइज है। और ही हैज हैंडल as well as chaired all the committees relevant to audits of the ICAI as well, and he is currently the member of Corporate Law Committee of PhD Chamber of Commerce and CII National Committee on Financial Reporting 2020-21 and the National Executive Member of FICCI. He is currently governing body member of the Foundation of Audit Quality FAQ। और भी बहुत इतनी है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वो सेमिनार मेरे ख्याल में रह जाएगा। तो मतलब इतनी ज्यादा जगह पे संजय जी की मतलब एक्सपर्टाइज, इन्वॉल्वमेंट, एज वेल एज ही इज चेयरिंग द मेनी बोर्ड्स आल्सो, नंबर ऑफ सेमिनार ही हैज डिलीवर ऑन द बैंक ऑडिट एज वेल एज अदर टॉपिक्स एज वेल। नाउ चार्ज टू संजय जी। संजय जी विल गाइड अस अबाउट द बैंक ऑडिट, हाउ टू डू इफेक्टिव बैंक ऑडिट। वैसे अश्विनी जी को संजय नाम से बहुत ज्यादा प्यार है। थैंक यू जी, अश्विनी जी, राजेश जी, गौरव जी, राजेश जी, राजेश जैन जी, and other members of the committee of the
Pusa Road Study Circle. I'm really happy. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rajesh ji, thank you very much for inviting us. And I know कि आपने बहुत बारी प्रयास किया पहले भी dates और ये भी बहुत ही because of certain circumstances I was able to give but it's never been like this. I'm always happy to be at this forum. So we'll try our best to take you through all the major developments in the bank branch audit. And at the outset, just wanted to also mention that अश्विनी जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि और सब जगह पर जो मुझे सुनने को आता है वो यही कि जी बैंक जो ब्रांच ऑडिट है कम हो गए, ठीक है, किसी को मिला नहीं मिला जैसे भी, लेकिन अश्विनी जी ने यही कहा कि जो काम आपको मिला है उसको ठीक तरह करें. So अगर वो हो जाए तो एटलीस्ट आई थिंक दैट इज व्हाट इज इन आवर हैंड्स. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन आवर हैंड्स, जो हमारे हाथ में, हम उसको ठीक तरह से करें. तो आई एम अगेन मैंने कहा इस बात को मैं भी स्ट्रेस करूं. दूसरा, खन्ना साहब मेरे साथ हैं, सब लोग जानते हैं कि मेरे गुरु हैं. जो भी आज की डेट में थोड़ा बहुत बैंक ऑडिट में जानता हूँ, खन्ना साहब से ही सीखा हूँ. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज हियर टुडे टू गाइड ऑल ऑफ अस. So the way we have structured so I will be sharing a presentation. I will take you through the major changes in the IRAC norms. I'll focus on that. I'll give an overview of the IRAC and other aspects, and then Khanna sir will give his thoughts on LFR and other aspects. So Rajesh ji, I think Yes, sir. Time would be about 1.5 to 2 hours. How much 2 hours, 2 hours, sir. 2 hours. Up to 7. So I will take you through my presentation. This presentation is a very exhaustive one, so certain slides I'll be skipping, but मैं आपको कुछ इसको edit करके मैं presentation भेज दूंगा आपको, आप share कर लीजिएगा. उसके अलावा the material which we prepare every year and which Khanna Sahab is for so many years he's been working, this is now also ready and soft copy can be mailed upon request. Okay, so this has all whatever I'm going to talk, guidance will be provided as far as the material, and everything has been updated in terms of circulars and all. So just wanted to also mention that. So अगर आप परमिट करें राजेश जी तो मैं शेयर करूं. सर प्लीज सर. शेयर. ओके. सॉरी राजेश जी, 1 मिनट लगेगा इसके अंदर. हाँ नहीं, प्लीज टेक योर टाइम. अगर मैं आपको मेल कर दूं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं क्या? सर मेरा भी हाथ बड़ा तंगी है थोड़ा सा. नहीं, ये पहले एक्चुअली ये लैपटॉप दूसरा वाला. 1 सेकंड रुकिए, मैं कर रहा हूँ. इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, तब सर उसको सेलेक्ट करो. पहले उसको ऑन कर दो, बैकग्राउंड में ऑन है. अब उसको सेलेक्ट करो वहां से, जूम से जा करके. ऑन तो कर दिया यहाँ पे. 1 सेकंड. प्रेजेंटेशन तो ऑन है. शेयर स्क्रीन पे सर आप सेलेक्ट करो. वो शेयर स्क्रीन पे इसमें सेलेक्ट होता है. हाँ, 1 सेकंड. जूम पे सर. अच्छा, इसमें आ रहा है हु कैन स्टार्ट ओनली होस्ट. नहीं सर, ऑल पैनलिस्ट कर दिए यहाँ से. वैसे तो वो सभी कर सकते हैं. ठीक है. ऑल पैनलिस्ट. ओके, वैसे तो सारी कर सकते हैं, होस्ट में ही है सारे. अरे होस्ट है सर. अब वो कर दिया. शेयर. आप उसके ऊपर क्लिक करो सर, जो एरो बना हुआ है. हाँ कर दिया, वो कर दिया मैंने. हाँ, वो ग्रीन वाला सर.
ये इसमें हो नहीं रहा। सर मेरे को भेजो, फिर मैं करता हूँ इधर से। हाँ मैं आपको 1 सेकंड भेज रहा हूँ, आप कर देना, मैं फिर आप मेरे को मेल कर दो, मैं इधर से कर देता हूँ, दूसरी तरफ चलाता हूँ इधर। CA@gmail.com सर। भेज दिया आपको, देखो मिली। हाँ जी सर, 1 मिनट मैं इधर से बंद कर दूं, 2 जगह पे चल गई मेरी ना ऑडियो सेटिंग। इधर से ऑडियो निकाल। सर ये दिनेश अभी आई नहीं सर, 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। CA@gmail.com। अभी नहीं आई सर, 1 मिनट, आ गई सर। आ गई सर, आ गई, बस 1 सेकंड में सर, 1 सेकंड। सर इसको भी आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट, पैनलिस्ट में कर रखा है ना, ठीक है सर। ये लो सर, अब ये आ गई। हाँ भाई, इसको पीपीटी मोड पे डाल दो। स्लाइड शो ये कर दिया सर। ठीक है, चलिए तो ठीक है। सो इट इज नाउ presentation is visible to everybody? yes sir, yes sir. Okay, excellent, thank you. So next slide पे आ जाइए अश्विनी जी। Thank you. So this is what we will be covering as far as the today's topic is concerned. हाँ जी, next slide पे आ जाएं। Oh sorry sir, sorry अश्विनी। 1 मिनट। So ये I think this is something which is very inspiring for me and I want to share with all participants. I've been doing that I did that last year also. So Mr. GP Kapadia के कुछ thoughts हैं जो हमारे first president थे institute के, and so he's talked about at that time the chartered accountant is a person on whom every member of the society would rely and rely strongly. His certificate would be won by way of a seal and a hallmark of which would inspire confidence in the minds of all concerned. And as such a person fully competent holding a charter from the supreme legislature of the country for the purpose. So अगर हम इसको बस अपने ध्यान में रखें जब भी हम साइन करते हैं इस चीज को, I think it's very important. और अश्विनी जो आप कह रहे थे कि काम जो हम करते हैं उसको हम लोग ठीक तरह से करें, so then the inspiring words of our honorable president Mr. Kapadia will come true. So just moving on, एक ओवरव्यू अगर ले लें कि बैंकिंग के बारे में अभी इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा। They have talked about, because हम COVID-19 पैंडेमिक से निकल रहे हैं, तो they have talked about the fact कि the NPA assets may have structurally declined, allowing for some lagged impact of the pandemic. So pandemic is now getting over, so that is something which they have said. But still the gross NPA ratio from a banking perspective, they are saying could go up, is reduced from 9.4% to 8.6%. Marginally जो है same because of restructure asset बढ़ गया था। एक आपने पीछे सबने पढ़ा होगा और सुना होगा कि National Asset Reconstruction Company has been formed, which will take over the stress assets. Deposit insurance में कुछ reform हुए to taking into account a lot of failures in banks to ensure that the insurance has been increased and depositors are protected. Next slide please अश्विनी जी। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो म्यूटेड ही रहेगी, सो बेसिकली अबाउट 7%। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं बैंक्स के, अगर आप बैलेंस शीट्स देखें, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मैसिव इंक्रीज।
And I think it's because of the fact of the the lesser provision now as we are coming in, that the banks are able to show profits. There is curtailment of expenditure also. The volume, I think the base which is there has gone up. Larger banks are able to use that. Even smaller margins are helping them improve their profits. Digital payments जो है उसके बहुत ज़्यादा increase हो गए. I think this is another area where has seen a lot of growth, especially during the COVID pandemic. A lot of work has been done through digital payments. That is something which has been acknowledged. From a stress perspective, the financial stability report has talked about some stress in the micro and small medium-sized sector, which we are all aware. So idea is to understand कि भी कहाँ पर challenges होने लगे हैं, जो कि हम बैंक audit जब करें उस time पर we should be aware. और उन्होंने ये भी कहा कि stress testing अगर करते हैं banks, तो हो सकता है उनको जो gross non performing asset है वो बढ़ जाए. तो इस हिसाब से banks को करना है, लेकिन from an audit perspective, I think we need to be aware in the scenario we are in. We are, just to summarize, we are coming out of the COVID pandemic. We are seeing still some stress remaining in some sectors, and उन sectors के अंदर हमको थोड़ा सा careful होना है. हमें ये भी देखना है कि yes, NPA अभी खत्म नहीं हुए हैं, बढ़ भी सकते हैं because of certain stress. So that is the basic idea which I wanted to give. If we move now to a preparation quickly, very quick summary on the preparation for bank branch audit. उसके लिए जो हमने document बनाया है वो आपको बहुत help करेगा. And as I always say, certain prerequisites and understanding of जो अगर अश्विनी जैसे कह रहे थे कि काम हमको ठीक करना है, तो prerequisite ये है कि हम अपने आप को proper knowledge रखें, जो applicable regulatory requirements है, ICA publications हैं, उसको देखें. Our staff is trained, और जो टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है उसको हम कैसे कंप्लीट उसमें कर सकते हैं. उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, RBI सर्कुलर इस बारी RBI has come out with a master circular for after many years as far as IRAC norms are concerned. So 2015 के बाद अभी अक्टूबर के अंदर RBI came out with a master circular. उसमें कुछ चेंजेस हैं which I will discuss. उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन भी आए RBI की जो हम डिस्कस करेंगे. कुछ implications जो हम समझते हैं उसके बारे में बात करेंगे. These are certain other things. नया जो guidance note है बैंक ऑडिट का वो भी आ गया है, and it is divided into two parts, the central audit as well as branch audit. Publications जो हैं और standards की auditing और accounting की वो आप जानते ही हैं. So from a starting perspective, basic analytical procedure, looking at what is जब आप audit के लिए जाते हैं उस time पर it's always good to start off with the basic analytical procedure in terms of advances बढ़े नहीं बढ़े, NPAs बढ़े पिछली बारी क्या थे, कोई sorry, I think am I not audible? एक कुछ comment आया है अश्विनी जी. नहीं, proper audible है सर. कोई दिक्कत नहीं है. वो अगर किसी मेंबर का है तो काइंडली राजेश भाई हैंड रेज कर दें. नहीं, उसके पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होगी अपने सर, आपके अपने एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. अगर किसी और मेंबर को है तो चैट बॉक्स में लिख दें काइंडली. अगर कोई ज्यादा को आ रही है तो पता चल जाएगा हमें. ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से anyway. So this is very important कि भी एडवांसेस ब्रांच में कितने थे लास्ट टाइम, अभी कितने हैं, उसमें NPA कितना था, अभी NPA कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफर हो गया है. उसके साथ कंपैरेटिव ये भी देखना कि भी इंटरेस्ट जो है जो सस्पेंस इंटरेस्ट था उसको कंपेयर करना, जो इनकम एक्सपेंडिचर. सो दीज आर सम बेसिक एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी डन. पिछले साल की जो रिपोर्ट है ऑडिटर, जो लास्ट ऑडिट रिपोर्ट, LFAR, जो भी कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको देखिए. ये समझना कि डिसेंट्रलाइज, अब काफी चीजें जो है डिसेंट्रलाइज कितना हो गया, मेजर तो अब सेंट्रलाइजेशन हो चुका है फ्रॉम अ ऑडिट पर्सपेक्टिव, बिकॉज एवरीथिंग is now controlled at the central level. So a lot of automation has happened, but there are still things which there's been done at the branch level in terms of input of final interest rates, details about borrowers and all. So ये समझना बहुत जरूरी है. Exception reports to understand system से CBS जो भी है उससे कौन सी exception reports निकलती हैं,
there are, so those are the ones which one needs to be aware of. LFR के बारे में भी हम बात करेंगे. अदर सर्टिफिकेट अटेस्टेशन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज कॉमनली आई फाउंड कि बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स देने होते हैं. गाइडेंस नोट एक बैंक का है ऑन द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड द वे सर्टिफिकेट्स हैव टू बी गिवन. सो प्लीज डू नॉट जस्ट गिव अ सील एंड साइन इट ऑफ. जो भी सर्टिफिकेट देखने हैं उसके अंदर ये इंश्योर करना है कि जो भी डेटा है वो डेटा का बैकअप है कि नहीं है, रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं. इनफैक्ट सर्टिफिकेशन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट इज मोर ऑनरस देन एन ऑडिट. ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट जो है उसको देखना. प्लीज डू नॉट साइन ऑफ ऑन. अगर सपोजिंग आपको अपलोड भी करना है तो एक आपकी जो लेटर हेड पे ऑडिट रिपोर्ट जानी बहुत जरूरी है. फॉर्मेट एंड जो भी कंप्लायंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर उसी हिसाब से लीजिएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है, एंगेजमेंट लेटर्स, जो लेटर ऑफ रिक्वायरमेंट हमारे जो मटेरियल है उसमें दिया हुआ है, वहां से आप बैंक को दे सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन ensuring that you are getting all the information, and information you can also track कि कब मिली क्या नहीं मिला. And this will help you draw up your audit plan और audit program जो उसमें दिया हुआ उसको आप एक बारी जरूर देखें. बाकी जो response है management का उसके from all the queries raised, you should ensure. So this is a snapshot of the advances. Advances क्या हैं? So in terms of classification of advances, now as we are all aware, there is another classification. So standard को भी अब divide कर दिया गया into SMA category, SMA 0, 1 and 2. इसके बारे में बात करेंगे. और बाकी सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस तो हैं. So उन चीजों के अंदर कोई चेंज नहीं है. SMA के अंदर further RBI has given some clarification in terms of how the classification has to be done. So अश्विनी जी आगे चलते हैं. जो हम लोग ऑडिट करते हैं उसके अंदर सैंपल कैसे सिलेक्ट करें डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच साइज. आपकी ब्रांच सिटी में है, बाकी मुफस्सिल एरिया में जैसे भी है, तो बेस्ड ऑन द LFR देयर इज अ थ्रेशोल्ड व्हिच वी कैन look at, which is 10 crore और 10% of branch advances. ये तो है ही. उसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो हमने आउटलाइन करी हुई हैं जहां पर ऑडिटर्स को जरूर देख लेना चाहिए. अगर RBI ने कहीं पर कोई कमेंट किया अकाउंट, डेफिनेटली उसके बारे में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि RBI का जो कमेंट था, कोई एडवर्स क्लासिफिकेशन उन्होंने कही, उसके बारे में ब्रांच ने क्या किया, कैसे एड्रेस किया. सो दैट इज समथिंग व्हिच वन नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने जो LFR के अंदर अकाउंट्स के ऊपर कुछ कहा हुआ है उसको जरूर देखिए. स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स जिन अकाउंट्स की हुई हैं उसके बारे में उसमें आप जो स्टॉक ऑडिटर ने कहा है उससे आप देख सकते हैं कि कोई कंसर्न तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, कहीं स्टॉक के बारे में या ड्राइंग पावर कंपटीशन के बारे में कोई चैलेंज तो नहीं है. NPA जो अपग्रेड हो गए हैं स्टैंडर्ड में, जो लास्ट टाइम NPA थे इस बारी अपग्रेड हो गए हैं, उसको किस वजह से हुए हैं, ड्यूज आ गए हैं नहीं आ गए हैं, जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उनको जरूर देखना. बाकी जो SMA अकाउंट्स हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए. जो वील मूव ऑन टू दी IRAC. सर को किसी ने हैंड रेज किया, एक बार देख लें अगर कुछ. राजेश जी, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक, अदरवाइज मैं देखता हूँ. नहीं सर, ये शायद वैसे ही पहले का यही चंद्र प्रकाश जी का है. चंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछें सर. चंद्र जी. नहीं सर, कुछ वैसे ही है उनने. I'd be happy अगर हम बाद में ले लें, लेकिन अगर कोई प्रेसिंग क्वेरी हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें. I'd be happy to answer. So IRAC नॉर्म्स का जो सर्कुलर मैंने बताया था, नया सर्कुलर आ गया है. तो पहले एक बारी हम समराइज कर लें कि क्या है, उसके बाद जो चेंजेस हैं दोज आई विल कवर एंड आई स्पेंड सम टाइम ऑन दोज चेंजेस टू सी कि उसका क्या इम्प्लीकेशन है. सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है. एन एसेट व्हिच सीजेस टू जनरेट इनकम बेसिकली, कि दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द IRAC नॉर्म्स. और उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल, जो एडवांसेस, अकाउंट और जो बिल, उसके अंदर भी 90 डेज का. लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा RBI ने और स्पेसिफाई किया जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो 90 डेज पीरियड का उनका इंटरप्रिटेशन क्या है,
और आउट ऑफ ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन और क्या उन्होंने आज कहा है उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर दिया, उसके बारे में हम समझेंगे. Otherwise, out of order, remains the same in terms of, interest not being serviced, there being no transactions, or the credits not being, enough to service the interest. So please, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम आगे जाएंगे तो उसको रेफर करके देखते हैं कि क्या उसमें चेंज हुआ. आगे चले अश्विनी जी. सर इसमें बैंकों में इस बार चेंज आई है, जैसे एनबीएफसी में एक सर्कुलर आया है वही चेंज बता रहा हूँ, वही बताऊंगा अभी. वही 91 डेज का ड्यू हो जाता है, इसमें भी वही बताना अभी. ठीक है जी. दैट इज व्हाट आई विल कम. तो जो नए इसमें पहले बारी जो मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ कि जो आईरेक नॉर्म्स का सर्कुलर है उसमें जो नए कुछ क्लॉजेस हैं उसका क्या इम्प्लीकेशन है. देन आई विल गो टू दी 2 new circulars which came in. One was in November and one in February, and then try to relate it to the IREC norms. तो एक तो उनका जो एक पैरा 4.2.2 था जो पहले सर्कुलर का, जिसके अंदर उन्होंने पहले जो लैंग्वेज यूज करी थी कि दे वर ट्राइंग टू टेल बैंक्स कि आप इसको ऑटोमेट करिए, एटलीस्ट हाई वैल्यू को करिए और अटेम्प्ट करिए कि कोई भी इसके अंदर चीज रह ना जाए. लेकिन अब उन्होंने और स्ट्रिंजेंट कर दिया है. जो 14 सितंबर 20 का सर्कुलर एक आया था इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, जहां उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेस को यूज करना है बैंक्स को. एसेंशियली व्हाट नाउ दे हैव डन इज that they have actually brought in the entire NPA gamut under the technology. और इसके अंदर बैंक्स ने आरबीआई ने ये भी कहा कि they were not satisfied with what the banks were doing, so they asked the statutory auditors to certify कि जो बैंक ने सारा ऑटोमेट कर लिया कि नहीं कर लिया. अब इसके अंदर एक so there were a lot of lag as far as the automation was concerned, and this is one of the reasons why perhaps RBI is going into reducing the coverage of the branches also, because once they have said that the entire process is automated, and जहां पर automate नहीं भी करा वहां पर banks के SOP होने चाहिए, चाहे वो agriculture हो गया, चाहे restructuring हो गया, चाहे इनफैक्ट EMI loans हो गए. इनफैक्ट a lot of banks were taking EMI loans, आपको पता होगा, इंस्टॉलमेंट वाइज. लेकिन वहां पर भी अब आरबीआई ने जब कहा तो वो भी 90-day पीरियड. सो दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल चेंज जिसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है ऑन द एंटायर एनपीए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन गैमेट. दूसरा जो देयर वाज नो जो अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीएस, इसके बाद भी एक क्लैरिफिकेशन आई है. लेकिन मास्टर सर्कुलर में उन्होंने कहा कि अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड, अकाउंट विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज एनपीए. लेकिन ये अरियर्स की क्या बात है इसको हम थोड़ा सा भी आगे और देखेंगे. और एक और उन्होंने कार्व आउट कर दिया. पहले उन्होंने कहा था रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नॉन अचीवमेंट ऑफ डीसीसीओ के लिए भी अलग से जो इंस्ट्रक्शन उनकी है वो अप्लाई करेंगी. क्रेडिट कार्ड के अंदर एक चेंज है जहां पर कि पहले इट वाज 90 days फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, लेकिन यहाँ पर अब जो उन्होंने कहा कि विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट इज नॉट पेड फुली विद इन 90 days फ्रॉम द पेमेंट ड्यू डेट. So my understanding, and maybe Khanna sir can also come in later with his views, is that they have actually advanced 30 days the classification of the NPA, because पहले क्या होता था कि आपकी 90 days from the next statement date होता था, और अब उन्होंने कहा कि ड्यू डेट से आपको 90 days लेने पड़ेंगे. तो जो अगर आपकी स्टेटमेंट आती है 25 दिन बाद या 30 दिन बाद तो वो टाइम भी आपको मिल जाता था, बट नाउ दे हैव कंप्रेस्ड दैट टाइम टू 90 days फ्रॉम द ड्यू डेट. उसके अलावा अगर उन्होंने कहा एक रिलैक्सेशन दी कि जो रिपोर्टिंग है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को वो 3 दिन के बाद होगी पास ड्यू के, और अगर आप पेनल्टी भी चार्ज करेंगे वो भी 3 दिन के बाद हो सकती है आफ्टर द अकाउंट इज पास ड्यू. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एज फार द क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स आर कंसर्न. आगे चलिए अश्विनी जी. बाकी क्विकली, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट द ब्रांच लेवल, बट आई थिंक वन शुड नो. फ्रॉड के ऊपर प्रोविजनिंग उन्होंने कहा कि फुली करनी पड़ेगी. अगर 4 quarters के अंदर करते हैं तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, स्पेशल रिजर्व को.
स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर एक उन्होंने कहा बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए, और परमिट कर दिया बैंक्स को 31 मार्च तक फ्लोटिंग प्रोविजन को यूटिलाइज करने के लिए फॉर स्पेसिफिक प्रोविजंस बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड स्ट्रेस। फिर थोड़ा सा इसमें उन्होंने चेंज किया एज फार एज एसएमए की जो डेफिनेशंस थी विद रिगार्ड टू, उन्होंने ये रीइटरेट किया कि आपको इंसिपिएंट स्ट्रेस जो है लोन अकाउंट में वो इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बारे में उन्होंने बताया कि डिफॉल्ट क्या होगी, इमीडिएटली जहां पर ड्यू डेट है आप पेमेंट नहीं करेंगे तो दैट विल बी टेकन एज डिफॉल्ट। और टर्म लोन के अंदर 3 कैटेगरी बनाई, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ये पहले भी कैटेगरी सेम चल रही थी और कैटेगराइज होगा, बैंक्स के अंदर सॉफ्टवेयर है जो जिसके बेस पे हो जाता है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स हैं अब वो क्लासिफिकेशन इसके अंदर हो जाएगी। सीसी फैसिलिटी में उन्होंने अब स्पेसिफाई कर दिया कि उसमें SMA 0 कैटेगरी नहीं है, SMA 1 और SMA 2 ही है, बिकॉज सीसी के अंदर जो डिफॉल्ट है उसमें यह है कि जो आउट ऑफ ऑर्डर 30 डेज के लिए रहना चाहिए, इस वजह से अगर 30 डेज के ऊपर हो जाएंगे तो वो डिफॉल्ट मानी जाएगी। इसीलिए SMA का जो कैटेगराइजेशन है वो SMA 1 से ही शुरू होता है फॉर CC एंड OD फैसिलिटी। सो दिस इज समथिंग व्हिच they have done as far as SMA is concerned. बाकी they have reiterated as far as submission of details to CRILC with the exposure of 5 crore and above, जो आपकी मंथली जाती है और अगर डिफॉल्ट हो तो वीकली जाएगी। जो एक रेजोल्यूशन के ऊपर उनका पहले सर्कुलर आए थे जो मेरी प्रेजेंटेशन में भी कवर्ड है और पहले भी मैं कवर करता था, वो अब इसी के अंदर आ गया है विद रिगार्ड टू द फैक्ट कि आपने जो रेजोल्यूशन प्लान है जो 2000 करोड़ के ऊपर थे उसके अंदर अब उन्होंने कैटेगरीज और बना दी हैं 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तक और 2000 करोड़ से ऊपर। और उसमें उन्होंने कहा कि आप पहले ही स्ट्रेस होने से पहले आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर स्ट्रेस हो सकता है, आप बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनाएंगे, और जैसे उन्होंने कहा कि आप रेजोल्यूशन प्लान इवन बिफोर डिफॉल्ट कैन बी स्टार्टेड, और रिव्यू पीरियड है एक 30 दिन का जिसके अंदर डिसाइड करेंगे क्या करना है, आपको रिकवरी करनी है, रिस्ट्रक्चरिंग करना है और क्या चेंज इन ओनरशिप करनी है, और 180 दिन का पीरियड दोबारा से रिइटरेट किया जहां पर कि रिव्यू पीरियड से कि आपको रेजोल्यूशन प्लान को फाइनलाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट ना करें सो अकाउंट कैन बी देन डाउनग्रेडेड और उसके ऊपर प्रोविजन ज्यादा करना। ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन के कंडीशंस हैं, डिले हो जाए तो उस पर आपको प्रोविजन एडिशनल प्रोविजन करना है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड। आगे चल सकते हैं अश्विनी जी। And again on as far as the provisioning is concerned, so we'll मैंने इतना बता दिया, बाकी अगर कोई डिटेल हो तो we can take it up later। एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी जस्ट लास्ट पैरा, सुपरवाइजरी रिव्यू, इसमें इन्होंने कहा एनी एक्शन बाय लेंडर्स विद एन इंटेंट टू कंसील द एक्चुअल स्टेटस ऑफ अकाउंट्स और एवरग्रीन। एवरग्रीन का क्या मतलब है कि भी आप किसी तरह से जो एनपीए था वो नहीं होने दे रहे, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बार बार रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई नहीं कर रहे, विल बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंजेंट सुपरवाइजरी एनफोर्समेंट एक्शंस एज डीम अप्रोप्रिएट बाय आरबीआई। तो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम हायर प्रोविजनिंग भी कर सकते हैं और मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू थिंग विच दे हैव सेड। इसमें एक पैराग्राफ और भी था विद रिगार्ड टू जो रेजोल्यूशन प्लान है, जहां पर उन्होंने कहा कि एक सेपरेट सेक्शन है ऑन प्रोविजनिंग विद रिगार्ड टू ऑल दीज रेजोल्यूशन प्लान। अब हम इस पे आ जाएं जो आरबीआई की जो ये क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं 12 नवंबर के और 15 फरवरी का, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लें। पहला उन्होंने कहा कि जो ड्यू डेट है रीपेमेंट ऑफ लोन उसको स्पेसिफाई करना है, बिकॉज द व्हाट दे हैव सेड एज फार एज दे हैव आर्टिकुलेटेड कि जो ड्यू डेट है उसमें समटाइम नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द लोन एग्रीमेंट्स, बिकॉज हम रेफरेंस देते हैं कि इस इवेंट के बाद ये इवेंट हो जाए उसके बाद रीपेमेंट स्टार्ट होने का, नहीं, आपको स्पेसिफाई करना है, डिस्क्रिप्शन नहीं देनी कि भी इस इवेंट के बाद सपोजिंग जैसे मॉरिटोरियम के अंदर कभी कभी होता था कि जॉब मिल जाएगी या ये हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट द रीपेमेंट डेट, या हाउसिंग के अंदर देयर वाज अ स्पेसिफाइड थिंग, तो उन्होंने कहा नहीं, आप डेट लिखेंगे लोन एग्रीमेंट में। कभी कभी क्या होता था कि सप्लीमेंटली बैंक्स जो है एग्रीमेंट में नहीं मेंशन होता था, वो सप्लीमेंट एक आपको शेड्यूल दे देते थे जो यहाँ एक्सेल शीट होती थी, यहाँ एक और एडिशनल शीट होती थी जहां पर कि जो रीपेमेंट शेड्यूल दिया जाता था।
उन्होंने कहा नहीं, ये लोन एग्रीमेंट में ही होगा और लोन एग्रीमेंट के साथ साइन ऑफ होगा। दे फील कि बोरोअर्स को इन्फॉर्म नहीं कराया था, उनको पता नहीं होता, बैंक चेंज कर देते हैं। सो दिस इज नाउ बीन मेड मैंडेटरी नाउ फॉर बैंक्स। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि एनपीए कैसे होगा, अकाउंट एसएमए कैसे होगा, वो भी आप बताएंगे, डेट्स क्या होंगी, उसके ऊपर आप एग्जाम्पल भी देंगे। और ये सारी चीजें जो है लोन एग्रीमेंट के अंदर आ गई हैं। इसकी कंप्लायंस जो है नए लोन्स के लिए दिसंबर 31, 2021 है, और जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वो जब भी रिन्यू होंगे लोन्स उस टाइम से आपको लेना पड़ेगा। जो उसके बाद जो एसएमए के लिए उन्होंने कहा कि डे एंड प्रोसेस की उन्होंने बात करी है कि essentially it has been now brought in line, जो एसएमए क्लासिफिकेशन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन है, उन्होंने 30 डे पीरियड बहुत स्ट्रिक्टली ले लिया कि जो एक दिन जो डे एंड के अंदर भी आएगा उसको भी आपको वहीं से लेना पड़ेगा। सो डेट ऑफ एसएमए विल बी टेकन इन ऑन द बेसिस ऑफ द डे एंड एज ऑन दैट कैलेंडर डे। इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया है जो अभी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लें। हाँ जी, ये सर्कुलर का पार्ट उन्होंने लिखा। अगर हम वो देखें कि कोई ड्यू डेट अगर अकाउंट की थी 31 मार्च, उसके बाद कंटिन्यूज टू रिमेन ओवरड्यू, अकाउंट शैल गेट टैग्ड एज SMA 1 अपॉन रनिंग डे एंड प्रोसेस ऑन April 30, 2021, बिकॉज 30 दिन तब हो गए। तो अकॉर्डिंगली SMA 1 जो हो गया वो हो गया आपका April 30, 21। Now, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA 2 upon running day end process on May 30, 21, क्योंकि 30 दिन तब हो गए, 30 अप्रैल से 30 मई तक। पहले आपका 31 मार्च तक था, 31 मार्च से 30 दिन आपके कंप्लीट हो April 30। नाउ बिकॉज मई के अंदर 31 दिन है, अब जो 30 दिन डे एंड प्रोसेस का मैं लूंगा वो लूंगा June 29, 21, विच मीन्स कि ये अगर 90 अगर ओवरड्यू रहा तो 90 दिन इसके जो कंप्लीट हो गए वो हो गए June 29 को ही डे एंड प्रोसेस यहां पर चलेगा, नाइदर नॉट 30th June। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, जिससे कि बेसिकली एक दिन जो है एडवांस हो गया फॉर द एनपीए क्लासिफिकेशन पर्पस। तो ये एग्जाम्पल सर्कुलर के अंदर दिया हुआ है, होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड। दोबारा बता देता हूं कि जो भी 30 दिन है वो डे एंड प्रोसेस के बेस पर होंगे आपका, और 30 दिन पर एग्जैक्टली 30 दिन लिए जाएंगे। और उस वजह से जो अगर एक ग्रेस हमें एक दिन का मिल जाता था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जून और 1 अप्रैल और जून 30 के बीच में 91 डेज होते थे, तो वो एक दिन का ग्रेस अब उसका नहीं मिलेगा। तो वी कैन गो अहेड अश्विनी जी। और आउट ऑफ ऑर्डर के अंदर भी पहले जो अगर आप देखें, मैंने इसके अंदर एक चीज को बहुत लाइट में लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ ऑर्डर का जो रेफरेंस लिया जाता था वो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट लिया जाता था। तो अगर तो आपका जो अकाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसकी ड्रॉइंग पावर इट इज एक्सेस ऑफ द ड्रॉइंग पावर फॉर 90 डेज। अगर उसके अंदर क्रेडिट्स नहीं है कंटिन्यूसली for 90 days or credits are not enough to cover interest debited, then it was to be seen as on the balance sheet date। मतलब आप बैलेंस शीट डेट पर देखते थे, लेकिन अब वो चीज हटा दी गई है। सो विच मीन्स कि अब ये 90 डे पीरियड जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट, इट कुड बी एनी डेट इन बिटवीन। जब से अकाउंट आपने डिस्पर्स किया था, इट कुड बी 15th June से डेट हो सकती है, इट कुड बी 3rd December, कोई भी डेट हो सकती है, वहां से आपको 90 डे पीरियड लेना पड़ेगा। सिमिलरली जो इन्होंने कहा कि 90 डे पीरियड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस ऑफ शैल बी इंक्लूसिव ऑफ द डे फॉर विच द डे एंड प्रोसेस इज बीइंग रन, जो कि हमने अभी एग्जांपल में भी देखा कि जो जिस डेट का जो डे एंड प्रोसेस है उसको भी हम इंक्लूसिव लेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। वो जो एक दिन है वो ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर लोन्स हैं, जो टर्म लोन्स हैं जहां पर इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पर अकाउंट एनपी होता है, वहां पर भी उन्होंने एंड ऑफ द क्वार्टर की को हटा दिया। अगर आप देखें, मैंने बहुत लाइट में लिखा हुआ है इसको। तो ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, अगेन
डिपेंडिंग ऑन द डेट, कोई भी आपकी अगर डेट है जहां पर इंटरेस्ट ड्यू था, चाहे वो 5th मई हो सकती है, वहां से आप 90 दिन लेंगे। बैंक्स हमेशा, इनफैक्ट द सर्कुलर एट दैट टाइम वाज इंटरप्रेटेड, और काफी इसके ऊपर डिस्कशन मैं भी कर चुका हूं, पहले भी कर चुके हैं, कि हमारे को उसको फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर देखना है, तो वो हमारे को ग्रेस मिल जाता था, लेकिन अब वो ग्रेस नहीं मिलेगा। सो इट इज नाउ इन बोथ केसेस, इन CCOD as well as term loans, the period for default will have to be seen in 90 days from the date of dispersal or date of renewal. आगे चल सकते हैं अश्विनी जी। फिर उन्होंने एक ये भी कहा कि जो अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन के बारे में 2 चीजें उन्होंने क्लैरिफाई करी। एक पहले सर्कुलर में, जो नवंबर का सर्कुलर, दूसरे फरवरी के सर्कुलर में। तो ये कहा कि although I have not come across such a case, but I'm sure there will be cases where this is being seen by RBI. तो उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में NPA को अपग्रेड करने के लिए आपकी रिकवरी, तो सपोजिंग मेरा इंटरेस्ट ओवरड्यूज इज लेट्स से 50 lakhs, but I have received 25 lakhs or 30 lakhs or 40 lakhs, which is not fully. प्लस अगर सपोजिंग मेरा प्रिंसिपल ओवरड्यू है फॉर अ सर्टेन अमाउंट, फुल इज नॉट बीन रिसीव्ड, बट बिकॉज देयर इज अ रिकवरी, अकाउंट इज बीइंग अपग्रेडेड. Now this is incorrect, although this is an incorrect interpretation of the circular also earlier, but they have now clarified कि आपको पूरा जब तक रिकवरी नहीं होगी आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने कहा, in order to avoid any ambiguity, it is clarified, maybe upgrade as standard only if the entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. So this is very very important. तो ये समझना जरूरी है, because banks were taking, some banks were taking the shelter. And if now that will not be possible. Secondly, उन्होंने और भी कहा कि अगर आपके बोरोअर के कोई एक क्रेडिट फैसिलिटी है, उसके अंदर मोर देन वन क्रेडिट फैसिलिटी, टर्म लोन है, आपका CC है, OD है, और एक अकाउंट जो है वो NPA है, तो अगर NPA अकाउंट, तो ये लैंग्वेज देखनी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि आप NPA के अंदर अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, सो सपोजिंग टर्म लोन मेरा NPA है, टर्म लोन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट थी या इंटरेस्ट था उसका मेरी रिकवरी हो गई है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जो बाकी मेरे अकाउंट्स हैं CCOD, उसमें अरियर्स नहीं है कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के. सो विच मीन्स, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अरियर्स. नाउ अरियर, सो मेरे पास अगर इसको अरियर को मैं डिफॉल्ट के साथ देखूं, मैं अरियर को 30 डे पीरियड के साथ देखूं, इसके अंदर अभी कन्वर्जेंस नहीं है. अगर तो मैं इसको डिफॉल्ट के साथ देखता हूं, तो विच मींस कि मेरा एक अकाउंट है टर्म लोन 1, जहां पर कि मैंने मेरा अकाउंट NPA हो गया था, CCOD के अंदर नहीं हुआ. इट कुड बी द अदर वे ऑल अराउंड आल्सो एक्चुअली प्रैक्टिकली, बिकॉज हो सकता है CCOD के अंदर मैंने जो टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट डाली है, बट जस्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल केस लेट अस अज्यूम कि मेरा टर्म लोन जो है वो NPA है, और उसके अंदर मेरी इंस्टॉलमेंट जो थी 3 थी 4 थी, जो भी थी वो इंस्टॉलमेंट सारी आ गई, इंटरेस्ट जो था वो सब आ गया. मेरा जो CCOD अकाउंट है वो अभी मेरा ओवरड्रॉन है. लेट्स से केस 1, इट इज ओवरड्रॉन फॉर 15 days. नाउ इफ दैट बी द केस, 15 days दैट इज ओवरड्रॉन, will I be able to upgrade this full account जिसके अंदर की OD भी है, मेरा CC भी है, उसको मैं अपग्रेड कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा? मेरे तो जो सर्कुलर कह रहा है कि एंटायर एरियर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर सपोजिंग इंटरेस्ट मैंने रिकवर नहीं किया हुआ उस केस में, और वो इस केस में मैं नहीं कर पाऊंगा. एक इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि नहीं, आप 30 डेज के लिए, बिकॉज SMA जो कैटेगरी है सपोजिंग CCOD की, वो SMA 1 में आ जाता है 30 डेज के बाद. तो बिकॉज देयर इज नो अरियर, देयर आर 30 days व्हिच वन कैन सी, तो 30 डेज का मैं ग्रेस ले सकता हूँ. सो इसके लिए मैं आई विल रिक्वेस्ट खन्ना साहब आल्सो टू गिव हिज व्यूज. आई थिंक माय वन व्यू व्हिच इज कमिंग इज कि कोई भी डेट किसी भी टाइम के लिए अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो मेरे को ग्रेस नहीं मिल सकता. आई एम ओनली गोइंग बाय नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट व्हिच दे हैव ब्रॉट आउट इन द सर्कुलर. सो आप कुछ कहना चाहेंगे? I'll take it on. You see, this is the
the beauty of the drafting of our people sitting in various places where they dish out something and they want to give a clarification because they do not see the practical side of it. You know, the use of the word, the entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. You take a case where there are 4 accounts of a particular borrower. Now, because one of the accounts is in default on account of the non-payment in time or non-servicing of the debt in time, that 90 days period or whatever, that one facility is, it becomes NPA. By virtue of this facility becoming NPA, the borrower becomes NPA because the classification is that of a borrower. The classification is not of the account as such. The account which was in default on account of a monetary reason has turned the other normal running accounts which were otherwise standard into a borrower which was standard earlier and has become an NPA. It is the borrower which has become an NPA. Now, in the normal course and logically, when the account which went into default, when the default is cured, that means all the installments of principal and the interest which was in default has been paid and there are no arrears in it, that account would be upgraded. The other accounts are independently, when you apply the tests of the NPA, they are not NPAs. And therefore, by virtue of the curing of the default, which was the causa proxima of the NPA for the borrower, that is cured. Once that is cured, the account, we need not consider there to be arrears in the other 3 accounts because they are not in arrears. उनकी due date ही नहीं आई है, वो out of order नहीं हुए independently examined, and therefore those accounts are normal running accounts. This account, when it is upgraded, all the accounts will be considered as upgradation for the borrower. This is my interpretation, and this seems to be logical also. Otherwise, what will happen is that you do not expect a standard account in the normal course or a performing account to have, the normal accretion will take place. The normal accretion in the account is not putting the borrower into a default. That's the key word that needs to be understood. So the curing of a default that led to the NPA will make it upgraded. If the other accounts independently examined become NPA, then this also will continue to be NPA. So the lowest of the classifications in health will apply to all the accounts. That is the way I think we should interpret it, and that would be very, very logical. If there's any interpretation further required, I mean, now somebody is not understood, we can explain it again. That's why I gave an example. इसमें तो सर फिर ऐसे हो जाएगा जब पहले तो ऑन ए सर्टेन डेट ऑफ बैलेंस शीट और क्वार्टर एंड पे होता था ना एनपीए, अब तो एज एन ऑडिटर हमको पूरा साल देखना पड़ेगा कि अगर एक भी डेट को उसके 92 डेज हो गए और 31 मार्च को उसकी 2 इंस्टॉलमेंटें भी खड़ी हैं तो वो अकाउंट एनपीए ही रहेगा, बिकॉज ऑन ए वन डे इट बिकम एनपीए और वो अपग्रेडेशन ही गलत है. May I put it this way? There's another issue, and I think this is a very critical issue for all auditors and banks. The CBS platform, which is used for automatically recording and identifying and recording the advances into the health classifications, that has to be correctly done. All the parameters as per the RBI norm, the law, and the accounting norms applied will have to be correct. Now, the branch auditor cannot see that. He cannot view it. He has no access to it. He will have to rely on what the bank tells him. So there is a management representation with regard to this issue, that this is a matter which is being examined by the head office. And accordingly, the accounting policy has been drawn up, a copy of which is available to the branch auditor. Don't forget that the branch is responsible for dealing with the advances, unlike investments which are dealt with elsewhere. So the auditor is really concerned, and the law says
that the provisions have to be to the satisfaction of the auditor. How does he satisfy himself that the provisioning is correct? And the branch is only saying that this is the health classification. He is not giving the provision. The provision is computed on a centralized basis at the head office. So based on the data cleared. So what is important is what is the information or knowledge with the branch auditor to enable him to say that the classification made by the bank and churned out in terms of the statements sent out to the branch are in accordance with the parameterization taken on a very correct and faithful basis. So for that, I think we have been recommending over the years, Sanjay and I had, because we sat over this issue many years ago, and we started saying that you must have a separate para, which is a kind of a disclaimer, and that appears in our audit program. The language of that can be borrowed. We copy paste that, put it down in our report that we are not sure that the parameterization has considered every aspect of the law and regulations, and we have placed reliance on the representation of the management at the branch that the parameterization has been done. Okay, so we actually virtually are reserving our thoughts on it. If you like, I can read out what has been drafted. You want me to read it out now, or can take it up later? We can take it up later. So this was, thank you, sir. Thank you. But the example which I have is different. But in any case, I thought it's best to have both the views there. And then as far as income recognition policy for loans with moratorium on payment of interest is concerned, so if essentially what was happening is that if what is said is that if there is a moratorium which has been given and permitted at time of sanction of loan, and the interest which was capitalized at that time, and the account turns an NPA, then that interest does not need to be reversed. So this is a clarification which the RBI has brought in this case, as far as loans where there was a moratorium which was given. So that is a relaxation. We can come to the next slide, Ashwini ji. So this was the example which I have taken. We've discussed this, but we've also taken a different view. I think somewhere this will be clarified towards with more discussion and deliberation. But it's important to understand these two views. Yeah, we can go ahead, Ashwini ji. Next slide. No, but may I only say, whatever view is taken at the branch level by the auditors, one or the other, whatever way it has been interpreted, should be brought on record that this is what has been, how it has been interpreted, and a representation also taken from the management of the bank, because one bank may do it, another bank may follow the other method. So what is being followed? So therefore, even if there's an error of judgment, so long as you have exercised your mind, you cannot be at fault. The principle of, principle that needs to be followed is that have I used my judgment in a particular manner? If that is on record and also backed up by a representation, I don't think one can be in default, and there is no audit risk that will attach. Thank you, sir. So, so these were the clarifications. So let's just review the IRAC norms where there is no change quickly. So as far as income recognition policy is concerned, there's no change. As far as on realization basis, interest on advances on term deposits and NSCs can be taken to income provided adequate margin is available, but this is not the same for gold against advance against gold and other securities. This is applicable to government guaranteed advances. Once the NP is identified first time, income has to be reversed. It's applicable to government guaranteed advances also. Appropriation of recovery, again, it has to be in a uniform and consistent manner. And
the ideal is to take it to the charges, then unrealized interest, and then to principal. So that is the way this should be done. And also there is a caveat that it should not be out of fresh credit facilities which are sanctioned to the borrower. So a lot of times what happens is that so essentially what needs to be borne in mind here is, if you have a borrower who has specified that the money which I am paying is to be used for towards principal only, then you will take it there only. If the money is just coming in, then it has to follow a logical sequence, and most banks have adopted that procedure. Then in case of OTS, sometimes there could be a different view which is taken, because there is a specification there that the money should go towards the principal. So if there is a specification there, and this is something which perhaps may not be automated fully, so it will not be captured by the system. So the branch auditors also need to be aware, and perhaps they can ask, because now RBI has said that in cases where you have not automated, there has to be an SOP in place. So they can ask for the SOP also as far as the NPA recovery is concerned, as far as OTS is concerned. Next slide, please. As far as importantly, one needs to again remember that asset classification has to be borrower wise and not facility wise. And we just discussed that issue right now, that not only one account, if one account is NPA, the entire account becomes NPA. And this is now pretty much fed into the system. The core banking system has that facility. It depending on basis of the ID of the customer. So that has been done. Accounts where there is an erosion in the value of security. So if it's 50% erosion, then you will take it from standard, state to doubtful. It will not go to substandard. If it falls down to 10%, then it will be straight away go to a loss asset. Or if there is a fraud in the account, then straight away it goes to loss asset. Advances under consortium arrangements, each bank is free to make their own classification, but there is a report which one can obtain from the other bank. There is a format given in the bank in our audit program also, so that as an auditor, as a branch auditor, you are aware of what is the classification which is being done by the other bank. It is not necessary that if it is a non-performing asset in another bank, then it will become a non-performing asset, but it will also lead us to understand if there are any risks as far as such accounts are concerned. So loans with moratorium for payment of interest, obviously one needs to look at the moratorium period before the classification or the default is accounted for. We can go ahead, Ashwini. Then in cash credit accounts, again, drawing par calculations, regularity of stock statements and comparison with audited financial statement. Now there's a requirement under CARO also. So you need to understand that if there is what is the process which the bank is now following. I think this is very, very fundamental in terms of receipt of those stock statements. And, how is it unaudited still coming, or is there an auditor statement coming? And you can also look at the CARO. And from now on, I think if there are audits which are done, closed off by the time, you can look at the CARO reports also. Last year, although this would not have been reported, but if there is some delayed, some accounts have been done, you can look at the CARO reports. Then proper debtors, creditors, drawing par competition, because in case of the LFR also now auditors need to report as far as proper competition of drawing par is concerned. So debtors, जो margin वहाँ दिया हुआ है, जो period दिया हुआ है, creditors का जितना लेना है, so that needs to be understood very, very clearly. Agriculture advances, understanding of the short term, long term, and also if there are any concessions given at the state level, if there are whether those only have been accounted for. In fact, RBI has come out now in some banks and saying that if
in fact, one of the banks, I remember there was an observation that how have you determined that the rollover of the KCC accounts actually cash has been received? So this I know has always been a challenge. There have been a lot of questions which have been asked that the rollover happens per se, and whether cash has been received or not. So राकेश बारी जी का एक हैंड रेज है सर. हाँ जी, सॉरी, राकेश बारी जी का हैंड रेज है. हाँ तो क्वेश्चन ले लेते हैं अगर कुछ है तो. सर हाँ जी, आपको सर किया है जी. आप बारी साहब, राकेश बारी जी आपका हैंड रेज था सर. एक मिनट. ये है सर, वो जा तो वैसे ही हो गया होगा. चलो कंटिन्यू करें सर, मेरे ख्याल में करनी रहे. ठीक है. सो मैं ये कह रहा था कि ड्राइंग पावर कंप्यूटेशन के लिए रेगुलरिटी ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स, पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट इन केस वी नो दैट देयर आर नॉन मॉनेटरी डिफॉल्ट्स आल्सो व्हिच आर पॉसिबल. तो अगर पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट हो तो आपको उसको some banks have a system जहाँ पर कि creditors they will take at the time of assessment of the drawing power. इसके ऊपर बहुत debate हो चुका है. RBI has come up with certain it is also we've covered in our audit program. So one, we need to see it is consistently followed. So if and in cases where, so let me explain. So what some banks do is that they will say that at the time of assessment of the DP, the creditors which was taken into account will be taken throughout unless there is an increase, if the creditors increase. So basically we are aware if you need to reduce the creditors to arrive at the drawing power. So one needs to understand and see if the detailed creditor statement is coming and there is a marked increase as far as creditors are concerned and they are not being reduced, then it means that the DP is not being computed correctly and not in accordance with the policy of the bank also. I'm not going into whether that is correct or not because that is a matter open for debate. All I'm saying is that whatever is the policy of the bank that has been consistently followed year on year basis, it is not selective. So that is something which all of us need to take into account. Then the margin on the debtors and stock and all has been taken correctly. In case of we come to the year-end regulation of borrowers accounts, I think there RBI has talked about fact that has to be taken into account very. So they've retained the same language where they've said that it has to be done very carefully. Because if there are genuine credits only, those have to be accounted for. So one needs to see if just before the balance sheet date, the account is being regularized. In a lot of cases, we go and check that there is no reversal coming post that balance sheet date also. We are also seeing that, from the subsequent recoveries in borrower account, there are challenges there also that what happens if the account is NPA as on the balance sheet date and there is a recovery later on before you are signing off. Some banks have taken a view that needs to be adjusted because that is the there is no point in making the account NPA now and then reversing it later on. In any case, one needs to take into account the clarification which was given by RBI now, where they say that the full default has to be cured. Full default is cured before the balance sheet date, that also through genuine sources, which is not, which is out of business only. And these can be, verified. Then only the account can be upgraded. If it is a post balance sheet recovery, that should not be taken into account for upgrading an account because that is not an adjusting event. It does not change the situation as at the balance sheet date. Appropriation of recoveries in NPAs I have discussed. So there could be temporary deficiencies for which accounts will not immediately be downgraded. However, ad hoc limit, if there is a in RBI said that more than 2 ad hoc, you cannot do, and in any case that has to be regularized during the year. But there have been cases where these are continued, so there have to be a genuine requirement for ad hoc limits. Those have to be demonstrated,
and they should not be in perpetuity. I talked about evergreening loans where you are not allowing the account to become an NPA because there is either restructuring done again and again, or there are other accounts from which there is money which is being received which are not business accounts, and the money is only coming in at the time at which the account is in stress, or account will be classified as an NPA. The quick mortality cases again deserve our attention. So if there is an account which has been sanctioned and within a period of the same year itself the account turns NPA, this needs to be reported in LFR also, and RBI has taken very, very strict view of these. The valuation of security, again, the LFR also requires us to comment on this. So at the time of sanction, the valuation of security has to be, one, correctly ascertained. There has to be the approved valuer who has done it, and it also has to be correctly fed in. We've found a lot of cases where the valuation, the security value, when you go from year to year, security value has not been fed in correctly. So that causes a problem once the account becomes an NPA, and the correct security value not being there, the provisioning is not done correctly. So that again is a very, very important aspect. As far as so in terms of non-monetary default, there was always been a concern as far as the repeated ad hocs and short review which is done. A renewal is not done. A short review. So now RBI has clarified. Last year they brought out a circular and they have clearly said that there has to be a board-approved policy. There cannot be a frequent repeated ad hoc. You have to do a full review. And in fact, if you go to the next slide, they've said that this will be open to the review by the auditors. It also has to be put into the core banking system. So now the concern which we used to have earlier, we are not finding that anymore. So this is a very, very clear indication from RBI that you cannot keep on doing a short review, because whenever you have to do a full review, the entire financials have to be seen by the bank and assessed as to whether the account really should be reviewed or renewed or not. So we can go to the next slide, please. सर कई बार तो ऐसे होता है ना कि हम जाते हैं छोटे लोनों में 5-7-10 लाख के, वो 3-3 साल से कोई रिन्यू नहीं हुआ होता, वो आज की डेट में शॉर्ट रिव्यू करके वो कह देते हैं कि बाद में रेगुलर रिव्यू कर लेंगे। तो इसकी कोई लिमिट, टाइम्स, कितनी बार शॉर्ट रिव्यू हो सकता है? और दो बार से ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर आपको जो भी पीरियड है वो करना ही पड़ेगा। आरबीआई ने कह दिया है, इस सर्कुलर को अगर आप देखें तो परमिटेड नहीं है। ठीक है, शॉर्ट। हाँ जी, आगे चलें। सो ये आईरैक नॉर्म्स है, प्रोविजनिंग की कोई चेंज नहीं है। बेसिकली 15% ऑन सब स्टैंडर्ड, 20 अनसिक्योर्ड है। जो as far as in terms of additional provision, जहाँ पर कि सब स्टैंडर्ड के अंदर जो सिक्योरिटी वैल्यू का होता था, there is a clause as far as substandard assets are concerned, जहाँ पर कि जो ab initio सिक्योरिटी वैल्यू थी, वो सिक्योरिटी वैल्यू अगर डिटरमिन हुई कि उस टाइम पर जो डिटरमिन हुई थी वो सिक्योरिटी वैल्यू कम है, उसके अंदर 25%, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके अंदर 20% प्रोविजन करने की जरूरत होती है। बाकी डाउटफुल आपका सिक्योर्ड है 25 और 140, सो देयर इज नो चेंज एज फार एज दैट इज कंसर्न। नेक्स्ट, सो रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आरबीआई ने रीइटरेट करके सर्कुलर के अंदर दोबारा से मेंशन किया कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगी। बेसिकली दे हैव स्पेसिफाइड कि रीस्ट्रक्चरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसके अंदर कंडीशंस भी दिए हुए हैं कि कहीं डिफॉल्ट कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है या इंसिपिएंट कोई स्ट्रेस है, उसी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग होगी। कुछ कंडीशंस है जो हमको देख लेने चाहिए, बिकॉज जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कर सकते रीस्ट्रक्चरिंग, बोरोर की फॉर्मल कंसेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी दैट बिकॉज ऑब्वियसली द बैंक विल हैव टू see if there is a stress and they are going to restructure. एक financial viability
they need to establish if they have to restructure. So these are some of the aspects which one needs to take into account to see, because it's a restructuring hoti hai, usko immediately they will have to downgrade to a substandard asset. So but restructuring ke upar bahut concern hai, because restructuring should not be taken in terms of evergreening the account. We can go to the next slide. MSMEs के अंदर कुछ relaxation है, उसमें उन्होंने as far as the upgradation is concerned in MSME के अंदर various, I have a separate slide in this which I will share later on, but there have been various relaxation because MSME was a sector under which there was a lot of stress. So there have been different relaxation. In fact, अभी उन्होंने जो latest आया था उसके अंदर exposure पहले 25 करोड़ था, उसको 50 करोड़ कर दिया है. उसके अंदर restructuring की eligibility की कुछ conditions हैं और आप restructure कर सकते हैं, और जो satisfactory performance है अगर हो एक उस period के अंदर, उसको आप upgrade भी कर सकते हैं. Satisfactory performance is कि अगर जो आपके dues थे वो पूरे clear हो गए हैं with regard to aggregate exposure which is up to 25 crores. In case of other exposure, they have talked about a 10% sum outstanding which has been received at least of the aggregate outstanding. उसको आप ले सकते हैं. Specified period is a period of 1 year. And then if the account is upgrade, उसके अंदर कुछ additional provisions की requirement है. We can move to the next slide. This slide we can skip, Ashwini ji, in terms of provisioning norms. I think this. So DCCO का मैं एक बस I'll just spend maybe just 5 minutes on the DCCO, which is a date of commencement of commercial operation. RBI ने इसके ऊपर बहुत clarifications आई, circular पहले बहुत आए हैं. Initially एक circular जो आया था उसमें था कि बैंक्स पहले डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन स्पेसिफाई नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंडेटरी रहेगा आप डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन स्पेसिफाई करना, बिकॉज व्हाट बैंक्स यूज्ड टू डू एंड इज कि दे वुड से कि द प्रोजेक्ट हैज नॉट कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन, देयरबाय द एनपीए नॉर्म्स डू नॉट कम इनटू प्ले. बट देन आरबीआई केम आउट एंड सेड कि डीसीसीओ स्पेसिफाई करना है और एक्सटेंशन भी जो है वो कुछ कंडीशंस में आप 1 साल या 2 साल कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 साल विदाउट डाउनग्रेडिंग द अकाउंट. सो इसके ऊपर और फर्दर अभी क्लैरिफिकेशन पीछे आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ. अश्विनी जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. इसमें इसके बाद वाली कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर के अंदर उन्होंने फर्दर रिलैक्सेशन दे दी है 2 साल की, जहां पर कि अगर आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट कमर्शियल ऑपरेशन ना हो बिकॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रमोटर्स, तो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट क्लासिफाइंग इट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. इनकम रिकग्निशन अगर स्टैंडर्ड है तो अक्रूवल बेसिस पर होगा. आगे चलें अश्विनी जी. इसमें 2 चीजें जो और नई आई हैं. नेक्स्ट स्लाइड अश्विनी जी. इसमें एक कॉन्सेप्ट अब आ गया डीम्ड डीसीसीओ का, जहां उन्होंने कहा कि अगर तो एक जो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स व्हिच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ चैलेंज आ रहा था कि वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, एंड दिस इज द बैंक्स वर समटाइम्स टेकिंग अ लेवरेज, कि अगर उसके अंदर देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, एक सपोजिंग 3 है अलग अलग जगह पर यूनिट्स, उसमें से एक भी अगर शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि वी हैव अचीव्ड द डीसीसीओ. लेकिन अब उन्होंने आरबीआई ने कहा कि उसमें 50% और हायर जो है ओरिजिनल एनविसाज कैपेसिटी, वो अगर अचीव होगा कमर्शियल प्रोडक्शन, तभी इसको कहा जाएगा कि ये डीसीसीओ अचीव हो गया. अदरवाइज इट विल नॉट बी सेड कि भी डीसीसीओ अचीव हो गया. सेकेंडली जो रिमेनिंग 50% है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको अचीव करना पड़ेगा. अदरवाइज फ्रॉम द डीम, जो डीम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाकी भी आपको अचीव करना पड़ेगा.
तभी जाकर ये कंडीशन मीट होगी एंड दी अकाउंट कैन बी हैव सेट टू हैव अचीव डीसीसीओ और टू टेक रिलैक्सेशन की भी अभी मेरा डीसीसीओ हुआ नहीं है। जो और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है कुछ और कंडीशन उसमें दिए हुए हैं कि ये कंडीशन मीट होंगे, कमर्शियल वायबिलिटी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टॉप हो गया है, तो आई कैन से कि डीसीसीओ हैज बीन अचीव। और इसके अंदर बैंक के पास ये लेवरेज है कि वो शिफ्ट कर सकते हैं विद इन दिस डीसीसीओ डेट दी रीपेमेंट डेट which or the condition is कि that should not exceed the DCCO date। तो उसके अंदर within that date they can make a shift और उसके अंदर भी they have a 1 year period and they can do a multiple shift as far as the repayment dates are concerned for the DCCO is concerned। next slide पे आ जाएं अश्विनी जी। और इसमें अगर finance कॉस्ट ओवररन भी है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर तो स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी आपने बैंक्स के पास है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट विल बी टेकन एज अ सेपरेट फैसिलिटी एंड द इनिशियल फाइनेंशियल क्लोजर जो है उसमें बैंक्स आर अलाउड टू एक्सटेंड द कॉस्ट ओवररन फाइनेंस उसको कर सकते हैं और एक्सटेंशन जो है डीसीसीओ का 2 साल तक कर सकते हैं, 1 year फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ। और इसमें और कुछ कंडीशन है विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अदर कॉस्ट और डेट इक्विटी रेशियो वगैरह अगर ये कंडीशंस हैं तो द बैंक्स कैन आल्सो फाइनेंस द कॉस्ट ओवररन्स। कोई किसी ने रेज किया हैंड, अगर वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी तो दो हैंड रेज हैं। आपका क्वेश्चन था राशि अग्रवाल जी, आपका भी हैंड रेज है जी। सरिया साहब अनम्यूट करके पूछो आप। राशि जी नहीं, इन्होंने ऐसे ही कर रखे। चलो आगे चलिए फिर। जी सर आगे चलिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए अश्विनी जी। हाँ जी। सो इसके अंदर एसेट क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि अगर जैसे अब ओवरऑल हमने कहा कि फंड आप कर सकते हैं, अगर तो जो कंडीशंस आप कंप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल को फंड करने की और आपने जो डीसीसीओ का एक्सटेंड भी किया है वो भी जो पीरियड हमने स्टिपुलेट किया उसके अंदर है, दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो स्टैंडर्ड रहेगा, उसके अंदर कोई एडिशनल प्रोविजन मुझे करने की जरूरत नहीं, जो भी स्टैंडर्ड पे प्रोविजन है वो करूंगा। अगर मेरा डीसीसीओ मैंने एक्सटेंड किया विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड लेकिन जो कॉस्ट ओवररन है वो जो कंडीशंस आरबीआई ने दिए हैं वो कंप्लाई नहीं होते, इट बी ट्रीटेड एज अ रीस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, उस पर 5% प्रोविजन करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब कि दोनों में से अगर एक कंडीशन नहीं मीट होता, जो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि डीसीओ एक्सटेंड किया वो स्टिपुलेटेड एक्सटेंडेड है बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड, लेकिन कॉस्ट ओवररन की फंडिंग जो है दैट कंप्लाइज विद कंडीशन, तो भी रीस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एसेट होगा, उसके ऊपर 5% प्रोविजन करना पड़ेगा। और अगर दोनों ही कंडीशन मीट नहीं होती हैं तो दिस विल बी ट्रीटेड एज रीस्ट्रक्चरिंग और इसको एनपी लेना पड़ेगा। तो ये डीसीसीओ को समझने का और जो फंडिंग ऑफ कॉस्ट ओवररन को समझने का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वेदर कॉन्सिक्वेंट टू दैट फंडिंग ऑफ कॉस्ट ओवररन एंड एक्सटेंशन ऑफ डीसीसीओ, whether the account continues as a standard asset, whether it is a restructured standard asset or it is downgraded as an NPA. So this is what I have now outlined. आगे चल सकते हैं। Quickly now moving on ahead, जो last year कुछ requirement और आई थी from a reporting perspective, ये 2 सर्कुलर मैं कवर कर चुका हूँ। ICOFR, IF उसको ICOFR कहें, IFC कहें, IFCOFR कहें, उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। नया LFR आया है और जो अभी हम खन्ना साहब टच करेंगे ब्रीफली। जो ICOFR के बारे में जो लेट मी जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड कि दिस इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स व्हिच वी डू इन अदर एंटिटीज। बैंक के लिए मैंडेटरी हो गया था और ब्रांच लेवल पे भी ये करने की जरूरत है। सो एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग, जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने ऑडिट किया दे विल बी अवेयर दैट
what the bank is, what bank does and what the statutory auditors do is that they have outlined what are the processes and drawn up a risk control matrix. उसके अंदर they have then defined कि जो controls हैं हमारे वो कहाँ पर ब्रांच लेवल पे कौन से होंगे, आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स है वहां पर क्या होंगे, और उसको आपको टेस्ट करना है. So essentially, so supposing at a lot of these controls which are applicable for ICOFR are actually taken at the central office level. There are certain which I will just share with you, which are applicable at the branch level. For interest, the interest हो सकता है, कुछ अप्रूवल की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एडवांसेस के ऊपर, कुछ रिन्यूअल्स हो सकते हैं on fixed deposits and all. So all these aspects are which are applicable at the branch level. Those have to be tested. Normal course में हम लोग audit जब करते हैं तो वो हम टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारे को टेस्टिंग करनी है, उसके टेस्ट रिजल्ट्स भी हमको मेंटेन करने. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसको हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये कवर, ये जो रेजोल्यूशन है इसको स्किप कर दीजिए, ये आगे वाला भी स्किप कर दें, ये हमने सब कवर कर लिया है. ये पहले ये अब सारा रिप्लेस हो गया है. सो जस्ट फॉर रेफरेंस ये गाइड केप्ट. आगे चलें, आगे चलिए प्लीज. कोविड रेगुलेटरी कुछ नहीं रहा. सो वी विल जो एमएसएमई के ऊपर जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के हमारे को जो आरबीआई केम आउट विद सर्कुलर्स May 21 का, इसके नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी पहले 25 करोड़ तक का था एग्रीगेट एक्सपोजर. इसमें हमने जो आरबीआई ब्रॉट आउट विद रिगार्ड टू 50 करोड़. कुछ इसमें कंडीशंस थे, वो कंडीशंस अगर मीट हो जाते हैं, पहली बात तो अगर पहले रिस्ट्रक्चरिंग हो चुके तो दोबारा यू आर नॉट एलिजिबल. बाकी जो भी कंडीशंस हैं, बोरोअर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, स्टैंडर्ड होना चाहिए अकाउंट 31 मार्च 21 को. Restructuring has to be invoked by 30th of September. Restructuring is to be implemented within 90 days. और इसके अंदर उनको प्रोविजन रखना है 10%. Asset classification benefit can be available. So this does not need to be downgraded. So this is as far as the MSME restructuring is concerned. We can go to the next slide. Next slide, please. This is RBI जो MSME की definition change हुई थी with regard to classification, micro, small and medium, both manufacturing and services. उसमें trading भी उन्होंने include कर लिया है. बाकी ये जो registration certificate की. So this is an outline with regard to what is an MSME. We can go ahead because this we've already covered. इसको भी skip कर दें. आगे चलें, ये भी skip कर दें. हाँ जी. ये अबे हाँ जी, we'll just take a यहाँ पर देख लेते हैं. इसमें आरबीआई ने जो रिक्वायरमेंट थी रिपोर्ट के अंदर, जो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 17th of March, दिस इज विल कम इनटू द रिपोर्ट. ये आपकी रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ब्रांच ऑडिट में भी आएगा. Are there any observations or comments on financial transactions or matters which have an adverse effect on the functioning of the bank? So इसके ऊपर एक गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट का है, उसको आप रेफर कर लें. जो डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी. Any qualification, reservation or adverse remark related to maintenance of accounts and other matters connected therewith. ये जो है सेकेंड और फोर्थ बुलेट, उसके ऊपर दोनों के ऊपर एक इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है विच इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज. सो एसेंशियली जो उसमें लिखा है वो ये है कि अगर तो आपने कोई, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड बुलेट विच इज ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक. सो broadly this could be a major effect only if there could be a going concern issue which at the branch level you may not encounter, or if there is any fraud, if the entire accounts, or there are substantial accounts which are fraud, which will also lead to a qualification in your report and which could have an adverse effect on the functioning of the bank. तो इसको हमें उस हिसाब से देखना है और उसको रिपोर्ट करने की जरूरत. But this could be a very very rare occasion.
Then if you come to the fourth bullet, any qualification, reservation or adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters concerned therewith. So अगर इसके ऊपर हमने कोई as far as accounts are concerned at the branch level, if there are we've come across anything on which we have again given a qualification, then that can separately will need to come into our audit report. Then coming to the fact about the internal financial control, जो मैं कह रहा था उसके बारे में, क्योंकि रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए अश्विनी जी, तो विल सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. इसके ऊपर एक टेक्निकल गाइड भी है. The central statutory auditors will be sending appropriate instructions to the branch auditors, which we've also been doing. और आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करना है. ब्रॉडली इसके अंदर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं, डिजाइन होता है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होती है. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि कंट्रोल जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसीलिए उसके आपको टेस्ट स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी. उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये जो एरियाज हैं. अगर नेक्स्ट में जाएं हम स्लाइड में अश्विनी जी. So certain aspects which we've tried to cover, for instance, closing and opening of accounts. There could be aspects related to capital adequacy. कुछ non-fund based accounts हैं जो opened हैं, जो rate of interest, repayment schedule या drawing power, value of security और feed in होती है. इसके ऊपर control. Next slide पे आए. With regard to cash balance, if there are any forex transactions carried out, suspense and sundry accounts if they are maintained at the branch, and if there is any non-interest expenditure, उसके ऊपर कुछ controls और जो इसके ऊपर कोई aspects होंगे, so हमारे को जो testing करनी होगी, जो scripts आपको मिलेंगी from, you will be specified from the statutory auditors कि आपको इसके ऊपर testing करनी है. मिस्टर शर्मा ने हैंड रेज किया, हम देख लेते हैं उनका कोई क्वेरी है तो. मैं देखता हूं सर. डाउन हो गया उनका हैंड. नहीं, कोई हैंड रेज नहीं है सर. वो था सर, वो उन्होंने मेरे ख्याल डाउन कर लिया. ठीक है, डाउन कर लिया होगा. ठीक. हाँ जी. जी सर. हाँ जी. सो नेक्स्ट स्लाइड. तो दिस आई जस्ट वांटेड टू गिव अ फ्लेवर ऑफ क्या है ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. मैंने बोला था कि ये स्टैंडर्ड्स हैं. इसके अंदर जो रिपोर्ट है आपकी, दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद SS 700. अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो SS 705 के हिसाब से. कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर नॉर्मली ब्रांच के लेवल पे आता नहीं है. की ऑडिट मैटर भी ब्रांच लेवल पे नहीं आता अनलेस there is a specification from the central statutory auditors that you need to communicate something as a key audit matter. Key audit matters are matters which are fundamental to the audit, जो communicate करने होते हैं. They could be जहाँ पर ज़्यादा risk है, जहाँ time ज़्यादा लगता है, complexity है. So basically these would be coming in at the head office level only. But there is a other matter paragraph. Other matter paragraph हम लोग यूज करते हैं जो इंस्टीट्यूट के जो भी फॉर्मेट भी है. We other matter paragraph normally is to indicate कि कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू दी ऑडिटर या ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है. इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन. तो सपोजिंग आप MOC कोई दे रहे हैं, उसका रेफरेंस अदर मैटर पैराग्राफ में आता है. कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपने कवर नहीं करे हैं ब्रांच के अंदर. सपोजिंग कोई प्रोविजंस हैं, ग्रेचुटी का है, कोई और एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोविजनिंग है ऑन NPA नॉर्म्स एंड ऑल, बोनस के प्रोविजंस हो सकते हैं. ये सारी चीजें जो हैं ये आप नहीं कवर करेंगे, हेड ऑफिस लेवल पे कवर होंगे. दीज आर देन स्पेसिफाइड बाय वे ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ. कुछ कोविड रिलेटेड अगर कुछ प्रोसीजर्स जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, जैसे हमने ऑनलाइन काम किया, हम फिजिकली नहीं विजिट कर पाए, हम बताना चाहते थे कि भाई ये जो काम है हमने ऑनलाइन किया है, ऑल्दो इट डज नॉट इम्पैक्ट आवर ऑडिट क्वालिटी, बट सो दैट वी कवर्ड अंडर अदर मैटर पैराग्राफ. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट दी ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. मैं ख्याल मिस्टर शर्मा का जो है हैंड रेज्ड है. शर्मा जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना. शर्मा जी
अनम्यूट करके पूछो आप क्वेश्चन, बीडी शर्मा जी। वेंकट रमन शर्मा जी हमारे, ये बीडी, अच्छा वो आ रहा है। नहीं सर, वैसे ही हो गया उनसे गलती से। चलिए सर, सो LFAR का मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ, फिर खन्ना सर ले लेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन है, इसके अंदर जो चेंजेस आए थे, एक बारी नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए अश्विनी जी। सो इसमें जो चेंजेस आए थे, those were with regard to the fact that हाँ जी अश्विनी जी, आप म्यूट कर देंगे एक मिनट। हाँ जी, कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया उनको। सो इसमें उन्होंने जो स्पेसिफाई किया था, ऑब्जेक्टिव था ट्रांजैक्शन टेस्टिंग टू प्रोवाइड इनपुट्स, और थ्रेशोल्ड बताया था, डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बात है, IT सिस्टम्स के बारे में बात करी हुई है, लार्ज एडवांसेस का जो थ्रेशोल्ड था वो चेंज कर दिया था, और जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी रिपोर्टिंग की, क्विक मोर्टेलिटी के ऊपर, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर करेक्टली फेड है कि नहीं। इनफैक्ट ये आपका IFC के अंदर भी कवर हो जाएगा जो आप LFAR में करेंगे, और क्रेडिट रेटिंग के बारे में, करेक्ट एंड वैलिड क्रेडिट रेटिंग की भी वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट क्रेडिट रेटिंग है कि नहीं, क्योंकि पुरानी क्रेडिट उसमें उन्होंने डाली कि नहीं, फ्रीक्वेंट रिन्यूअल रोलोवर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स जो हम एडॉक की बात कर रहे थे उसके बारे में बोला। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। रेगुलर रिसीट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स, रेगुलरिटी के बारे में, और क्या एक्शन लिया जाता है, DP प्रॉपर्ली कंप्यूट हो रही है नहीं हो रही है, जो सिक्योरिटी शॉर्टफॉल, जो सिक्योरिटी अगर मेरी कम हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, उसके बारे में, कोई रेड फ्लैग्ड अकाउंट है अगर फ्रॉड के लिए ब्रांच ने करा, उसके बारे में बताना। As far as a statutory audit report is concerned, our focus is to comment on the NPA कि NPA है कि नहीं। अगर NPA नहीं है, MOC आपने नहीं दिया तो आप क्वालिफाई करेंगे, बट LFAR के अंदर एडिशनली SMA 0, SMA 1 और SMA 2 की क्लासिफिकेशन के बारे में भी रिपोर्ट करना है, और अगर IBC के अंदर कोई जाना है उसका नहीं इनिशिएट हुआ है, ऑल्दो रेजोल्यूशन प्लान के बारे में सारी डिटेल डिस्कस्ड है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भी इतने 30 डेज के अंदर आपको वो रिव्यू करना है, उसके बाद रेजोल्यूशन होना है, 180 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना है। सो वो चीजें आपको यहाँ पर करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग अगर सेंटर पर है, हम लोग इसके बारे में बात करते रहे, खन्ना साहब हर सेमिनार के अंदर बताते रहे कि भी कैसे करना है, बट अब ये LFAR के अंदर रिक्वायरमेंट आ गई है। इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन नॉन फंड बेस्ड एंड फंड, जो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड, subsequent to devolvement of LC and invocation of BGs भी कोई फैसिलिटी आपने कोई हेल्प तो नहीं कर दिया बोरोवर को कि भी आपने नॉन फंड जो था, मतलब फंड बेस इतना ही था, लेकिन अब आपने नॉन फंड बेस के अंदर था, आपने उसको इंटरचेंज कर दिया टू टेक इनटू अकाउंट द डिवॉल्वमेंट ऑफ LC एंड इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी। आगे चले। So that was as far as the this was concerned LFAR। एग्रीकल्चर का मैंने रेफरेंस तब दिया था कि KCC के रिन्यूअल के बारे में, या जो RBI का क्या जो कमेंट्स है, दो चीजों के बारे में मैं अभी करके देन आई कैन हैंड ओवर टू खन्ना जी। KCC अकाउंट के अंदर हमने बहुत बारी क्वेरीज आती हैं कि दिस अ प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर accounts are shown as renewed because you have to, so basically the KCC accounts have to be regularized at least once during the year, and it cannot be possible that if the regularization is not done, the account can continue as a performing asset. So the challenge happens that how the auditor कैसे check करे कि भी actually regularization हुआ है कि नहीं। now उसके अंदर अगर because अगर फार्मर ने कैश डिपॉजिट करा है, वो कैश एग्जैक्टली आया है नहीं आया है, सो अगर इसको करना चाहें, सो देयर इज अ वे इन विच इट कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ सैंपल ऑफ अ डेट ऑन विच द KCC अकाउंट्स, यू कैन टेक अ सैंपल, उस डेट पर आप देख सकते हैं कि भी कैश एक्चुअली जो रिसीट है, डज दैट मैच, इज देयर अ बिग वेरिएशन। सो देयर आर ऑडिटर्स हु हैव डन दिस एंड हैव एक्चुअली रिपोर्टेड। The branches should not be doing, अगर आप सेंट्रल ऑफिस में, कंट्रोलिंग ऑफिस में बात करेंगे तो बोलेंगे कि इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर
you can only renew upon receipt of actual payments. It can be rolled over, but the money has to be received. सेकेंड एग्रीकल्चरल लोन के अंदर आरबीआई का कुछ केसेस में ये ऑब्जर्वेशन आया है कि अगर 3 साल से ऊपर अकाउंट आउटस्टैंडिंग है और कहीं पर कोई कैलामिटी रिलीफ नहीं है, सो वेदर द अकाउंट शुड बी कंटिन्यूड एज अ परफॉर्मिंग एसेट और नॉट, बिकॉज उसके अंदर उन्होंने क्रॉप सीजन्स को लेकर देखा कि शॉर्ट भी है, आपने अगर एक्सटेंशन भी किया, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म क्रॉप है, उसके बेसिस पे कुछ केसेस पर उन्होंने ये कमेंट दिया है कि एट अ सर्टेन परसेंटेज उन्होंने ये देखा कि भी इंटरेस्ट इतना आता है, सपोजिंग हर साल का मैं 100 के ऊपर 10 ले, मतलब 10% ले लूं, 3 साल के अंदर अगर वो इंटरेस्ट मेरा रिपे नहीं हुआ तो एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा अकाउंट है, तो दैट शुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. But there are no guidelines, there is no circular, but that is an informal basis on which RBI has been taking up. So what as auditors we can see is कि अगर accounts जो हैं after the period of default, the grace which is given as far as the RBI circular is concerned, यहाँ जहाँ calamity based relief है उसके beyond अगर account outstanding है तो those accounts can be classified as a NPA, or we have been doing it, in fact sometimes the full branch can be classified as a all the accounts can be classified as a non-performing asset also. So this is what I wanted to talk about as far as the agricultural advances are concerned. इसके बाद अश्विनी जी आप आगे चलें, these और skip कर लें slide इसके बारे में. So I'll close here my presentation, and again thank Rajesh ji, Ashwini ji, and all which for giving me this opportunity. I hope I have been able to take into given the time I have tried to compress and really take into account all the major changes also and all the concern areas. और अभी भी अगर कुछ queries हो, I am here and I will with your permission, if there's anything immediate I can take, otherwise I can request Khanna ji to share his words of wisdom in the next maybe 20-25 minutes or so. सर राजेश जी, गौरव जी को. Gaurav ji, I request you, Gaurav ji, please first introduce our another speaker, very learned, Khanna ji. Over to Gaurav ji. That is a Saturday gift for me for introducing the sir for after such a long time. My idol, one of the idol, Khanna ji, is a senior partner in KC Khanna and Company, Chartered Accountants. Important to mention is that the firm is established in 1942. मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था सर, मेरा क्या बहुतों का जन्म. I am 20 years short yet. Sir, it's an important quote for you. I was just looking for the quote by Henry Ford ji, Mr. Henry Ford. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80, and anyone who keeps learning stays young, whether at 80 or 20. This Very is good. for you only, sir. Wonderful, sir. Wonderful. So, sir is a chartered accountant qualified in May 1965. He is a fellow member of ICI since 1970, member of Institute of Internal Auditors, INC Florida, USA. He has done his BCom honors from Delhi University in 1961 and diploma in French language from Delhi University also. In professional practice since 1965, having handled supervised a variety of professional assignments, including large audits, public sector banks like PNB, SBI, RBI, Canara Bank. No name is missing in this list. And the prominent ones are insurance companies also, MMTC, IFCO, Hindustan Coppers, and various other private sector firms. He has served on several committees as chairman, including ASB, APC, research committees, corporate law committee, expert advisory committee, PDC, and whatnot, sir, international affair committee. Agrawal ji, it's a long list. National Academy Committee, Hindi Committee, Regional Languages Committee, Subcommittee of ASB for Financial Reporting System, for urban local bodies also. Sir has blessed the NIRC also in 1975 and 1976. Besides other offices being held in 1973, 74 and 1974, 75.
And he was nominated to various committees of the government and regulatory bodies, including Bank Audit Committee of RBI. Sir, important again to mention, since inception till 1988. And he was on the member of BIS, also Bureau of Indian Standards, GIC committee, and IRDA committee, member of NIRC committee on company law board to review qualification in audit reports. The complete audit reports overhauling was done by sir since long. Member of committees, various committees of RBI, like international financial standards and codes, and half-yearly review. One of the greatest gift given by sir to the profession is a half-yearly review of audit of accounts and the committing of rating models, etc. He has been organizing various professional programs and taken part in and contributed to deliberations and addressed various seminars, conferences, etc. on various subjects of professional interest organized by ICI and other institutes in India and outside India also. He's also been involved since long in government accounting standards and been part of various conferences in San Francisco, Chicago, Denver, Nashville, and other prominent part of the world also. He's been author to the publication of tax audit program, and very much important contribution by sir in formulating 44 AB of the Income Tax Act and bank branch audit program on yearly basis. Without such contribution in audit program, no audit is complete. We used to look into the audit program shared by sir every year from his kind office, and used to get even soft copies for formulating the questionnaires also. Beside this, sir is presently director of 3 companies in a professional capacity, was trustee of Can Bank Mutual Fund, was appointed by RBI as director in board, and also in Jammu Kashmir Bank. Sir, the list is so long. I'll request everyone to please skip a little part of that. And my humble thanks to sir for joining us and blessing us like anything. I wish sir from every member that you keep enjoying long life, and please keep guiding us like a mentor in bank audits for years to come. Thank you so much, sir. Thank you so much, Gupta ji. It's very kind of you. And at the outset, I must thank the organizers and office bearers of the Pusa Road CP Study Circle for inviting me to be with you. It's always a pleasure to be in our own kith and kin when, I have not only people who I recognize as my children, the people who have qualified from my office or their age growth, but the grandchildren and our great-grandchildren are also there. So that's the way I put it. But I'm also very privileged to have with me Mr. Sanjay Vasudeva, who is going to be a very strong pillar for the Institute all the time, as he has been in the past, but the pillar is going to be strengthened. He's very comprehensively covered the subject within the severe time constraints. In bank audits, we always talk about severe time constraints, but he has done, a very comprehensive coverage. And I'm sure that as the audit goes on this time, whatever has been spoken today will be of use. I will not take up in detail things. I would rather, take the important issues that are many times overlooked because we are all, most of us feel that the audit of advances portion is the total part of the bank audit, which is not correct. There are other very important areas that need to be covered, but the workload is voluminous. This booklet that is churned out this year runs into 457 pages. It's like a book by itself. And so don't be scared by its size or weight. Bulk of the work of this is ready-made material for the members of the profession, and the students will go and actually do the audit. Because ये ज़माना जो है ये copy paste का ही है, तो हमने क्या किया है, as in the past, to help out the members, there is ready-made material. Just take it out, put it on your letterhead, send out the letters. There are letters of acceptance, engagement, the letters seeking queries from management, and there are ready-made formats for the bank to understand exactly what they want. And not only that, we've got a management representation letter in response to our queries, which is a normal letter, which is supposed to be modified based on the facts and evidence that is presented to you in the course of audit.
we have taken, special care that we have given you the drafts of the audit reports, which are unmodified reports. At the same time, we have not ignored some of the important areas where you need to look into it, and they're covered by the audit program. They're ready-made paragraphs to be incorporated in the report, because drafting at the time when you are actually doing your work takes a lot of time and effort. So we have tried to cover you for that also. So there are there's a guidance to the members as to what they should do, what is the language they should use for the purpose of all this. Now, with all the letters and everything, and the knowledge that is imparted at various seminars like this, what else is left? What is important is that the people go to various outstation locations for the purpose of the audit. So what has been done is complete reference material that is relevant for the audit has been given. And the write-up, which is instead of 20 pages or 30 pages or 5 pages, has been reduced to a comprehensive understanding in 1 or 2 pages for each item, so that you don't have to come back. What is important is that you have with you in this booklet a complete list of all the related laws, the accounting standards, the auditing standards, the RBI circulars, which are split into directions, directives, and the guidelines. They are all hyperlinked. You see, one doesn't have to carry 2,000 pages of material. One doesn't have to go and ask the bank, I want this circular or that circular. Just click on to what is there in the program, and you will have a ready-made full literature available on the spot. You can refer to the paragraphs which are given, so it will not take too long. The idea is that we utilize our time in the best possible manner, and we are able to do a much better job qualitatively on the basis of a clear understanding. And what we also recommend is at each seminar that in case anybody gets stuck in some audit or any matter of concern is there, they can even write to us, send us an email, or even telephone us. There is no issue. In the course of the audit, somewhere in the whole of April, we are all busy responding to the verbal queries and getting draft reports from the auditors, and they need some guidance, and we give it to them. We also point out to them exactly where they can find that item in the audit program. So what I feel is that this program copy can be emailed to you, and then you can pass it on to the participants. And in case they have any issues, problems, or matters of concern, they can always get in touch with us. And you have our email address, and you also have our phone numbers, which you can pass on. There's no issue. Now, with this, I will touch on some of the important areas that should not be ignored. We mentioned that there is a limitation or restriction on the auditor at the branch level when he does not have access to the reports, the IS reports for the centralized computerized system, the CBS platform, which is also, churns out information for the bank as a whole, and in relation to the branch where you are the auditor. So you say, I need trial balance, I need this information or that information pertaining to the branch, then the information will come to you on the basis of what is recorded in the CBS on behalf of the branch. Now, where does the information flow from? It flows from 3 sources. One, it comes from the branch that you're auditing. The vouchers are there, evidence is there, the transaction has originated. So the source of the entry is the branch itself, where the transaction takes place in a complete form. Second one is where a transaction has taken place at another branch of the same bank, and it has taken place at any other branch but pertains to my branch. Therefore, it comes through the system to me. And then there are entries which are originated
by outsiders, like, LIC has to collect premium, dividends have to be paid, and so many, with this electronic banking, the transactions are voluminous, they move fast, and they come from these outside sources to the bank, and the bank then processes it. Transactions are captured, processed, and then they're relating to the branch, they come to you. The problem with the branch auditors is that they have no access to the evidence of the original transaction, which is not with them. Money is deposited in Chennai and you're doing a branch in Delhi. So you will only find a credit to the account of a customer, for example. I'm giving you this example. So when you ask, what is this credit in the account of this party? The branch manager says, sir, I don't know. This is a system generated entry. Why this amount is credited, why that amount is debited is not known, and it's not within the knowledge of the branch manager. And even if he knows, he says, sir, I don't know. His simple answer is that this is a system generated information, I don't have it. And he knows for sure that you're not going to refer the matter to the head office to find out what really happened. But this has its problems of its own. You see, this electronic processing of item and the system generated information also has a problem. I'll give you an example. You see, an account of a particular party was turning NPA. So what did they do? So they did not debit that party through the system. They debited another party which was having a savings account or was having facility. So the party is crying itself hoarse as to why a debit has come into their account. It gets reversed after a period of a month or two. You understand? So they avoid that account getting into the situation of NPA. They compensate this party if it's crying itself hoarse for the interest for that period. And they have saved a borrower from the situation or status of an NPA. It can happen. So all the mistakes, irregularities can be thus hidden through the system generated information. And therefore, what we had done in the background material, in the program material, there are paragraphs which have been drafted to cover matters like this. So I'll read out to you what has been drafted as a paragraph, that in case such a situation has arisen, you're facing a limitation in your work, and you're unable to take a decision as to whether to rely or not to rely on the system-driven information for which originating evidence is not available. So this is what you need to write in your report. The heading is transactions originating from the centralized system (EDP) and incorporated a branch based on the information inflow to the branch. This is the header for that paragraph. And then we say, we are informed that the reports of the information system audit, if any, conducted by head office are not available at the branch to ascertain whether there are any issues and matters that need to be addressed by the bank in connection with its branch financial statements, particularly as regards coverage or incorporation in the centralized system of all the applicable parameters and norms and guidelines, including those related to classification of advances for the purposes of income recognition and provisioning, etc. The branch management has represented that all the accounting norms as well as the parameters required by the regulator have been built into the system in relation to the branch financials, and that the branch financials or data is in consonance therewith. At the branch, reliance has been placed on the system-generated information or data in the computerized environment based on the CBS system laid down by the bank, particularly as to the originating evidence of transactions and recordings that are not with the branch. In other words, I'm having a kind of a disclaimer. The system-driven information you don't know, and I will not comment. This is in a nutshell, and I feel very strongly that this para should be, you can modify it if you like, but put it down, it is for your safety. Because tomorrow something happens, you have a transaction which you have cleared without mentioning this, and the transaction happens to be a fraud generated somewhere else, it has been passed on to you, you will have a problem. So why not, protect yourself? So the language of it is there, you can modify it, but in substance, I feel this is what you should do. Now,
uh, uh, there is an importance that I wish to lay on the information of the merged branches of the erstwhile banks. In the letters, we have requested the branch to give us that information also. You see, some of the banks have merged effective 1/4/2021. Now, it's possible that 10 days prior to that date, you see a particular account which has been taken over by me through that merger process may have been in default. Another 80 days pass, and then the account becomes NPA. For me, the date of NPA will be taken as what? Not 1st of April, because he is taken to be a customer of this bank. Similarly, you remember in February, an account is standard, and then subsequently, you start making provision, and you get the interest, and the difference between the compound rate and the simple rate relates back to that period. So that information is relevant and important and should not be ignored, because historically the record of the accounts is then available to you to determine the precise date on when these migrate from the standard to substandard to the doubtful and other categories, which impact on the provisions. On cash, I have one thing to comment on. ATMs now, this is part of the LFR also. The branches which have ATMs attached to them, you are bound to look into the cash within the ATM. What is the best way to look into the cash in the ATM? The slips that come at the end of the day. The balance slips that are generated by the ATM will tell you what is they are scrolls. Refer to the scroll. The balance will never tally with your books at the branch, and there's a reason for it. The day-end procedure to the branch for 31st March could finish at 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, depending upon the size of the branch and when they close. Now, suppose the branch has closed, a small branch, but has an ATM. It is closed at 6 o'clock or 5 o'clock on that day. The ATM balance will get recorded up to that time. Now, the date in the ATM scroll will keep on going on till middle of the night, and only next day there is a natural change of date. By that time, some people may have already accessed the ATM and may have taken out the cash. Cash cannot tally. The second thing that we've noticed generally is that the balance shown in the books in the ATM is a very odd figure. It does not even correspond and is not in sync with the lowest denomination of the notes that are stuffed into the ATM. So it cannot be an odd figure. And in many cases, we found as the main auditors that the ATM balance is, how come you are showing this in rupees and paisa? It's not possible. So this is what needs to be reported, that you just report that the figure in the books is so much, in the ATM balance, and actual balance is so much as per the scroll. This needs to be reconciled. The difference actually, we must understand, is on account of the withdrawals from the ATM by the customers of the same branch or the same bank, or it could be another bank customers where the annual branch entry will have to be passed. So the difference and the reconciliation will ultimately lead to these adjustments only. So this is the other part of it. Coming to the deposits. Now, one of the areas that we ignore here is one of the directions or directives of the Reserve Bank of India, which is very clear, all mentioned in the write-up, which is in the audit program papers, that that particular direction is 3.2.1, which says that you are bound to issue a fixed deposit receipt to each and every person who deposits the cash, the money with the bank for the purpose of fixed deposit. Now, this has to be on security paper. It's got to mention certain things, not only the amount, the rate of interest, the period on which it will, be
the maturity proceeds will be available. And it is this receipt that has to be given out to the customer in any case. What banks have been doing is, what happens on due date of maturity? They say now there's a suo motu renewal. On the due date, the computer as instructions will reverse the entry and simultaneously reverses that entry and issues another FDR. Firstly, we don't know whether the bank system is taking into account the deduction on account of tax and issuance of a deposit receipt net of tax, or is it doing on a gross basis? So that has to be seen, because in some of the banks, this is what was also noticed. Now, the the entry in the books in the deposit accounts of the bank is the same because it's reversed and re-reversed. But physically, there is no issuance of a fixed deposit receipt. So what happens? So the bank is having a credit in its books not backed up by a physical receipt issued to the customer. Now, if somebody plays mischief, the fixed deposit receipt is issued and it can be misused at another branch of the bank for taking loans. It will be legal marked by the person concerned in this branch. So that is a risk that is, a very major risk. And this is a fraud-prone area, and I think one needs to be careful. Secondly, the bank can give a loan against its own fixed deposits. There is no issue on that, and you have to mark a lien on it. Now, what lien will you mark in case where the banks resort to a system of issuance of only a letter? Only a letter saying that your fixed deposit is taken as renewed, as and when you come, we'll give it to you. We found that these original fixed deposit receipts issued were sitting in the drawers of the bank officials. So you cannot have a control over this, and therefore we reported that in DLFAR, that you cannot be holding fixed deposit receipts with yourself. You have to issue them positively. So this is a very important part of the whole thing. In some cases, what they do is the customer comes to the branch with his receipt, and on the inverse side, there is an endorsement renewed for 1 more year or renewed for 12 months or whatever, and they sign it. Now, they do not keep adequate records to back up that particular recording. So this is another dangerous area, that there is no fixed deposit receipt freshly issued in cancellation of the old one, and the old one has been endorsed without keeping adequate records. So this adds to the audit risk, and I think one needs to report it. The other thing is, the interest accrued and due, and interest accrued and not due on borrowings and deposits. This is not correctly taken in accordance with the 6th February 1992 circular. And this is not a disclosure requirement therewith. I think this requires reporting. I'll just give you an example. I'll just tell you, interest accrued and due forms part of the deposits. Interest accrued but not due that cannot form part of deposits, but must go to other liabilities. For example, in FCNRB, it is accrued, but does not become due till the actual maturity of the deposit. And therefore, it must be shown as part of the other liabilities. Then we come to contingent liabilities. Sometimes we pay little heed to this because you say it doesn't matter, whether the contingent liability is X figure or Y figure, but it needs to be checked because where obligations have ceased, you need to record them at the realistic figure of the contingency. Otherwise, it impacts the capital adequacy ratio, and that is it's not correct that we carry those liabilities on our shoulders, the bank, and certify those figures. The bank reconciliations, the confirmations that are received should not be self-generated by the branch and the letter sent out to the other branch for a confirmation. You must obtain a certificate from the other bank as to the balances as per their books. You see, sometimes what happens is, the bank will write a letter that as per our books, this is the figure, please confirm. So they confirm the figure and send it back. After a few days, a letter similarly comes from the other bank saying, as per our books, this is the balance, please confirm. And this bank also confirms that there's a difference between both these.
we need to have a confirmation from the person where the account is held, and then we look into the reconciliation. Now, the nominal heads, the frequency at which they are operated, and what is the nature of the entries, and what is the time lag of their disposal. Are these transitory heads being misused is what will be very apparent even on the basis of a review. In bills payable, we find that there are bankers' checks, pay orders, drafts, etc., which are very old. Now, why will somebody want to ask for a banker's check or a pay order if it's going to remain outstanding for 2 years or 3 years or 5 years? So get an age-wise, detail, and you will understand that, in many cases, what we found was that they may have actually paid it, but they debited a wrong account in the earlier years. We don't know. So in case this is the situation and you are unable to comment, please put it down in your report, and the LFAR, the format has been designed and given. Sanjay mentioned about the advances. I think an overview should be taken and see the composition of the advances in the branch last year and this year to see what is the propensity of the account going to the better or worse based on the health last year, the composition last year, the health this year. Upgradation and downgradation is required to be commented on, and this you can get the full details from the branch. The one thing I'd like to mention is about the documentation. The Fair Practices Code insisted upon by the Reserve Bank of India warrants that whenever you sanction a loan, you prepare the documents must be complete, because over documentation, under documentation, and blank documentation are all very dangerous in the case of a bank. And the idea is to avoid litigation in future. So they say, please complete this and give a copy to the customer so that there is no scope for any litigation on this account. I think there's a limitation on time. And in the case of the LFAR, Rajesh, what we have done is that we have given the question, each question, we have given you complete guidance in a tabular form. It's very easy to take it out and the report can be drawn up in no time. We are not dealing with those items of the advances generally, which have been covered by Sanjay, but if there are any questions on audit reports, maybe this may be the last point. On audit reports, the banks have now got a system that they need these reports to be uploaded. Now they're very reluctant to upload any reports with qualifications or any adverse remarks. And what they do is they say, please, you have your lunch and we will upload it for you because the system is down at the moment. And actually they upload a clean report without your knowing it. So do not pass on your digital signatures to the bank for this purpose. In case they have done something like this, please send a copy of your report directly to the main auditor from the branch by email and say, this is the report and it is now downloading, not uploading from the system, or what has been uploaded is not correct. So I think this is the precaution that you need to take. Is there any issues or questions, JG, because I think we are running against time and the subject is vast and one can carry on. I suggest if the participants have any issues and questions, not necessarily today or right away, it could be tomorrow, day after, or whatever, or when they are in the thick of the audit, collate all that, collect all those questions, and you can send it to us. And you have my email address, which you can pass on to them. They should not hesitate in getting any clarification they need, or they can even telephone. There's no issue. सर एक Q&A में बड़ा important question है सर, अगर आप देख सकें तो सर, consolidation का भी है। ये अभिनव चौरसिया जी का क्वेश्चन है सर ये। In case of cash credit and classified report
Yes. In case of cash credit, I'll read it out. Cash credit limit, whether we can we classify account as NPA in case during period of 90 days there is credit which is equivalent to interest charge. But if inspection insurance charge during said period is considered, then account falls short to serve interest. No, the thing is, an account has become, it's not serviced. All debits need to be cleared, isn't it? The debits, other debits will go on to raise the amount of debit in the books, the I balance. think it's interest has to be serviced. It So has this to means interest has not been serviced. If interest is not served, that's the So requirement. it's like payment in cash. So आपका interest अगर 2 लाख है 4 लाख है आपको 2 लाख रुपए देने हैं वो आपको हुआ नहीं ना उस टाइम तक. दूसरी बात और है, जब इसे आपको रिवर्स करेंगे इसको, जो अनरियलाइज्ड इनकम है, तो चार्जेस भी तो रिवर्स कर रहे हैं ना. Unrealized charges, interest are reversed. That cannot be taken as income. Have you understood what I'm saying? I think that's okay. Yeah. It can't be. Fourth line, in case of NPA account, what is the sequence of appropriate recovery NPA, whether it is first set off against charges or interest installment? So ideally it should be. Let me just give a very shortcut answer to it. What do you do, when the account becomes NPA? You postpone the income, that income which is not readily realizable in the light of accounting standard 9. So you do not recognize revenue and you postpone it. So, and it is to be recorded according to the accounting standard when you actually realize it. So you realize it in the second year or third year after it was due to you, then you need to recognize it as income. You cannot, although RBI says a uniform and consistent policy has to be there for appropriating the amounts received in NPAs where there are no instructions from the borrower, but those have to be logically interpreted according to the accounting standards. So what you will do is reverse your charges, go on to the unrecorded interest, then the recorded unrealized interest, then you go on to the principal, which is in default. And then one other aspect which we totally ignore is in all restructured accounts, rehabilitated accounts, there is an element of sacrifice which has to be recovered as a right of recompense. Banks don't do it. Please look into the letter that is the relevant letter for this purpose. And if it's contractually due, the right of recompense has got to be taken before you pay it. I think that's okay. So then take the third one. So there's no open questions. Okay. Third one is? What can a bank give agriculture loan to farmer whose land is already under Chakbandi? Consolidated. Yeah, the thing is, who is taking loans is not the landowner. You're taking a tiller. You're giving money to the tiller also. Anybody who tills the land is technically an agriculturalist who's entitled to a farmer. And also, so there are two things. One is that loan is being given to a farmer. Second, it is a security which is going to be offered against that. So if he has that security, then he will. So it could be for purchase of material, it could be for fertilizer, it could be for a tractor, it could be. So I think the issue is the security. So if the security is possible to be taken as a security, valid security, it can be. Otherwise, the bank will take some other security. I think that's something which normally land on patta is used, and there is a guarantor. The owner generally becomes a guarantor because he's interested in the income yield from that through this tiller. The farmer is going to work on this. Yeah. Then, as far as perfection of security is concerned, would you like to? So you have to give a notice. You have to ensure that the. Let me put it this way. The perfection of security for a bank comes through the documentation. The documentation is particular to the type of the loan or facility and the nature of the security. Both the things are covered. And therefore, if documentation is right, is done correctly, legally you are protected.
after you have also taken these steps in the case of a company to get your charge registered, and also with other authorities, for example, a vehicle, you go to the authorities, to get certify. the registration. So you perfect your security So, legally. Essentially, the issue is that the bank can can move against the borrower and realize a security to affect a recovery. So whatever needs to be done, as Khanna sir has said, in terms of different loans. So if it's a hypothecation, it's a mortgage. So these are all valid, and whatever documentation needs to be done, if there is sometimes there's a public notice to be given to ensure that there is nobody else. So there are no aspect with regard to the right ownership. So those have to be established, and that is established through documentation and also through a legal. The lawyer, whoever is there, will look at it and say that these documents are valid. So once that is done, banks has a legal right to those. That is what perfection. Let me say the most perfect security would be a fixed deposit receipt from the bank. You have a strict access to it. You don't have to go to a court. You don't have to do anything except for a technical process. But the access to security will come only through a legal right established through documentation. ठीक है जी. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर. मैं आप बता दूं सर को कि खन्ना साहब जी का जो मटेरियल है वो मेरे को पुराने दिन भी याद है कि सारे मेंबर जितने भी हैं सब वेट करते रहते हैं कि सर का मटेरियल आए और हम बैंक ऑडिट शुरुआत करें, क्योंकि तो करता धरता यही है. अभी आपको मैंने बता दिया, अभी आपको भेज देंगे. और सर का जब भी हम, मेरे को याद है जब मैं रीजनल काउंसिल में होता था या मेरे से पहले भी, हम सबसे रिक्वेस्ट करके सर से उसकी एक प्रिंट आउट लेकर के सब ब्रांचेज में भेजा करते थे, और उसकी इतनी डिमांड रहती थी कि शॉर्ट सप्लाई रहती थी हमेशा, और नॉर्थ में भी नहीं, सारे रीजन्स में हमें डिमांड आती थी कि सर का एक कॉपी हो तो हमें भेज दो, और ब्रांचेज में और रीजन से. और संजय वासुदेवा जी भी बड़े वंडरफुल. स्टिल आप सेंट्रल स्टेचुरी ऑडिटर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स को छुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बैंक ऑडिट में. स्टिल आई थैंक्स वंस अगेन एंड रिक्वेस्ट राजेश जैन जी, प्लीज प्रेजेंट ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. 2A में सर क्वेरी है एक मेरे ख्याल में. हाँ ले लो जिंदल साहब लो. In case of cash credit limit, whether ये हो गई सर, हो गई. ये भी करी थी, ये भी इसको हटा दीजिए. सर मेरे को भी मेल कर देना मटेरियल, मैं भी हर जगह फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप. हाँ बिल्कुल सर. मैं जैन साहब प्लीज, आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी. जैन साहब की आवाज नहीं आ रही, कंप्यूटर इसका कर रहे हैं सर. जिंदल साहब आप वोट ऑफ थैंक्स दे दो, फिर आप दे दो वोट ऑफ थैंक्स. सर हमें तो आप वेलकम के लिए रखो, हम नहीं मतलब धन्यवाद में रहना चाहते, हम तो हमेशा वेलकम ही करेंगे. कि कहते हैं वो लिखा होता है ना कि जब भी आप जाते हो कि विजिट अगेन, थैंक यू नहीं लिखना, विजिट अगेन. तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग हमें मार्गदर्शक करते रहो, आप हमें गाइड करते रहो. आगे भी हम आपकी सर्विसेज के लिए हमेशा संजय वासुदेवा जी को, MM खन्ना जी को हमेशा रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि ऑन ए डिफरेंट टॉपिक्स रादर जो अभी कंपनीज एक्ट में बड़ी चेंजेस हैं उसके ऊपर भी. तो आने वाले टाइम में हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो पूसा रोड स्टडी सर्कल का हो, जहां राजेश जी का और स्टडी सर्कल का हो, तो हर जगह पे आपकी सर्विसेज हमें हमेशा चाहिए होंगी सर, आपकी गाइडेंस हमेशा चाहिए होगी. आपके पास राइट है और लाइसेंस है, लिबर्टी है, आप हमको रात को भी जगा देते हो. सर मैंने तो 3 बजे फोन किया था सर, USA में थे, और सर बोले अभी तो रात के 3 बज रहे हैं राजेश. सॉरी मेरी बीच में डिस्टर्बेंस आ गई. मेरा भी वो अभी ना 12A की रजिस्ट्रेशन 31 तक है, मैं अपनी CA एसोसिएशन और GST बार की करवानी है. तो रादर आज तो मेरे को आपने फुली इन्वॉल्व कर लिया. संजय वासुदेवा जी ने बड़ी स्मार्टली कि वो चल नहीं रही है PPT, हालांकि ये एक्सपर्ट है पूरे. तो थैंक यू वेरी मच. आज आपकी इतनी अच्छी डेलिब्रेशन थी और बड़े अच्छे टॉपिक आपने बताए. वैसे मैंने एक बीच में इंटरप्ट भी किया आपको, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में भी ये इशू आ रहा है कि हमें बड़े मिन्यूटली देखना पड़ेगा कि अगर कोई NPA बन गया ड्यूरिंग द ईयर और लास्ट में उसकी पेंडेंसी खड़ी है,
तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए, क्योंकि वो Yes. जब तक क्लियर नहीं होता आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर सारा साल वो क्लियर नहीं हुआ है एक बार भी 100% तो अपग्रेड नहीं हो सकता। 100% you're right. हाँ, तो वो ये चीजें बड़ी मिन्यूटली इस बार आरबीआई ने की है। तो आई होप एवरीबॉडी हैज एंजॉयड एंड द नंबर वाज वेरी हाई during these times. We know that everybody is busy in time bards, even though more than 150 participants has joined, rather sometimes the sankhya was many more. Thank you very much for joining. Thank you once again. Thank you. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you, sir.